Now on air with the Crickong commentary team. Good evening and welcome to all the listeners on the Crickong Live podcast. I'm Dhanush Lavanya welcoming you all, and we are here for the first time finally. The US T10 Masters is starting, and it's starting on the Crickong Live, but it has started and has had a bunch of games already. We are bringing to you the Morrisville Unity taking on the California Knights. The toss has happened with Morrisville Unity winning the toss and electing to field. Looking at both the sides, it is the OG or the nostalgic Royal Challengers Bangalore openings pair of Parthiv Patel and Chris Gale coming out to open for the Morrisville Unity, and they have Snehan Jayasuriya at number 3, Obus Piera, Corey Anderson, Calvin Savage, Nevin Stewart, Harbhajan Singh the captain, Najaf Shah, Dan Pidd from South Africa, and Shantakumaran Shrishant. Oh, Shantakumaran Shrishant is basically Shrishant. I took a second before I read the second name. Shrishant is there in the bowling lineup as well. Looking at the California Knights, it is going to be Jack Callis opening the batting with Aaron Finch. What a deadly combo they are going to be, with Suresh Raina, the captain, coming back into the side after missing out yesterday's game. Milind Kumar is there along with Irfan Pathan, Dinesh Ramdin, the wicketkeeper, Ricardo Powell from West Indies, Pawan Suyal, Ashley Nurse, Peter Siddle, and Ben Laughlin are the 11 players coming out for the California Knights. And Karthik, how do you see this tournament finally kind of getting the rolling? Because the first few days was definitely not so good and not so convenient, or we can say it was not smooth. Well, we have heard the phrase, something is better than nothing. And that is why we believe that something, at least we are getting some kind of a game, as we see Chris Gale and Harbhajan Singh walk out side by side, and it's more often than not filled with the superstars, and let's say retired superstars. Amongst the current players, who is a current player? Maybe Ben Laughlin, even he is retired. It's all about the retired players only who are playing this kind of tournament. But yes, something is better than nothing. The weather looks bright and sunny today. The forecast is really good. Even yesterday, the first match was washed out. But after that, the second and third matches happened. And because of all this rain over this last 3-4 days, we saw this. In fact, you only asked me off air, what is that patch outside the ground? That's a hammering that the ground has got. And it is not me, but I have read a few comments from locals, a few locals over there. This is being played in Florida, if I'm not wrong. Yes. And in Florida, one of the locals said that you should never keep cricketing matches in this stage, at this time of the season, that is in August, September, because you get storms and you get lots of rain. Sometimes there are depressions in the seas as well, and which kind of, in the Pacific as well, which kind of brings those storms and rain to the ground. But as of now, well, we have it, and it's a short tournament. It was supposed to start on 18th and end on 27th. There was a break on 21st, and all the matches which didn't happen on 18th were postponed to 21st, and they were replayed. The matches were rescheduled, and eventually we got some action across that. And talking about the action, this is number 3 versus number 4. California Knights are at number 3, and Morrisville Unity are at number 4. Both teams have played 3 matches, lost 1, won 1, and had a game abandoned. And California Knights have a great run rate thanks to that wonderful knock from Aaron Finch yesterday. Ended up on the losing side, but his 75 gave them a lot to think about. So whoever wins this match, it's a match between equals, will directly top the table temporarily, because after that you have New York Warriors and New Jersey Titans playing. I think the Titans are playing the next match after this, and we will be covering that game as well. So T10 cricket is all about, but T10 cricket between retired players. It's a day of T10 cricket for us. First we did the ECS T10, now we are doing the USA T10, and after that at 9:15 p.m. we'll do the next match of the USA T10 on a length outside the off stump from Najaf Shah. Huge shout for LBW. But looking at Finn's batting style, he usually has this habit of moving across his stumps, and hence the impact, forget the impact, even if the impact was in line, the ball, the angle, this is Najaf Shah is a left arm bowler, the angle would have taken the ball away from the right hander. And Harbhajan Singh is the captain of the side bowling, that is the Morrisville Unity,
And yes, even to the naked eye, it looks like it will comfortably miss the off stump. The impact itself seemed to be off stump, and Harbhajan Singh was not too keen. He looked at the keeper and then at the bowler, and then eventually decided not to review. So it is interesting. We have got plenty of such series happening. I won't say retired players, but for experienced players, we have the Road Safety Series as well. We have the Legends League as well. Looking at which, we actually feel, why have these players retired? You see Virender Sehwag playing in that league. You see Irfan Pathan still playing. Yusuf Pathan still playing. And then Sachin Tendulkar, of course, he was also playing. So sometimes that makes us wonder, should these guys have retired in the first place? But they have their own reasons. And one of the main reasons for retiring is they don't want to play cricket all the 12 months. They might play cricket for a split amount of time, but you have your family time, etc., etc. And that's why they called it quits from all forms of cricket. Finch and Kallis, an Aussie and a South African. Finch, don't remember Finch playing with Kallis ever in any form. And probably this is that form which unites both of them, because Kallis has played a lot for Bangalore in the Indian T20 League. And while gets a juicy in-swinger on the pads from Najaf Shah. And he's, Chris Gale, Mr. 360, the universe boss. He's in the outfield. Exactly. What is he doing at fine leg? He's at fine leg. I think that's a joke to him, because he's actually fielding at fine leg. I have never seen him field anywhere outside the 30-yard circle. Even in his heydays, he used to be at first slip or maybe at a point, cover. These are the areas where he used to. But now I'm seeing him at a fine leg. Well, that's a promotion in his fielding status. Absolutely. I'm really happy that these players kind of get an opportunity to experience and enjoy these tournaments. Yes, the amount has definitely increased. I remember the first thing that I remember was the Abu Dhabi T10 that started up about in 2018, and that is where the opportunities kind of was given for the yesteryear cricketers to come and showcase their talent, along with a mix of current day cricketers as well. And a couple of good seasons of Abu Dhabi T10 is what led to the Zim Afro T10 that happened last month in Harare in Zimbabwe. And now that success has been kind of replicated here in US T10 Masters. With the way the Major League Cricket has happened in earlier this month, I feel that the confidence is only going to boost. And this is happening in a ground that was considered the only place to play cricket in USA. That is the Lauderdale Hill cricket ground here in Florida. But the tournament of Major League Cricket happened in Dallas and in Morrisville. So two places which has kind of taken the old abandoned baseball stadiums and have converted into cricket stadiums, have kind of given away a good tournament out there. None of those teams came and played here. So majority of the tournament happened there itself. So I feel going forward, the next editions of the T10 US T10 Masters will be going across the country of USA is what we can say. First over is done and dusted, and the score of the team is currently 3 for no loss after the first over. क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त. यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11. क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिकॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी. तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए. Yeah, that's right. Srisan then is ready to bowl. Share the new ball, as we might say, is ready to bowl from the other end. And my only issue, I always say this in many of the matches that we do, is that there are too many white ball formats. There is a T20 format, there is an ODI format, there is a T10 format, there is a 100 ball format. My only request is, just as in Test cricket there is only one format, right? Oh my word! Where did that come from? Well, Srisan bowling an outswinger to Aaron Finch. Well, initially it was a wide ball, that's fine, but it pitched and then swung further away, and the wicketkeeper had absolutely no chance, absolutely zero chance out there for wicket. Is Parthiv Patel the wicketkeeper? Yes, it is Parthiv Patel who tried to dive, but then he gave it up. It was so wide, a delivery way outside the off stump, and
Aaron Finch let it go 8 for no loss, and now Harbhajan Singh is busy just making some fielding changes. Well, I'll tell you what, if you're going to bowl that kind of a line, then you don't need to make any fielding change. He has got that man on the leg side to come and be at the offside. So one extra guy on the offside. So there is a short third, backward point, cover point, and extra cover for Aaron Finch. And what does Aaron Finch do? Gets an outswinger outside the off stump, lofts it over cover, but there is protection in the deep. And there is one disadvantage of playing on this ground, because there is so much rain out there. The ball lands on the outfield and just plonks. It doesn't. It doesn't give you the true value of a real outfield, and which is why it should have been a boundary, because Najaf Shah, who was at a deep point, had to run quite a long way, but he got to the ball, and in the end it is just a single for Aaron Finch as the score moves on to 9 for no loss. Srishant now over the wicket to Jacques Kallis, full and swinging away, driven straight down the ground. Is there a long off in place? There is a long off in place. So in T10 cricket, you have power play of 2 overs, wherein you can keep 2 fielders outside the 30-yard circle, and then after that you can keep 4 fielders outside the 30-yard circle. I'm not quite sure about the strategic timeout if there is any. I don't think there should be in a T10 game, nor there should be any drinks break. And in some countries, you have that floating power play, which the batting side can take for 1 over any point in time. And sometimes they have those fielding adjustments which are made. But as of now, there is nothing else. Srishant now over the wicket to Aaron Finch. In the air, but there is no mid-off, and hence Finch's miscued shot, lofted shot, goes down to long off. 11 for no loss in 1.3 overs. Yes, the start has been good. With Finch looking really confident so far, and even Kallis also, the last game that he played, he was looking in good rhythm, where a couple of very good shots were even kind of having the quality of Instagram reelist, where you could just showcase these iconic shots that we used to see from Kallis in the yesteryears. Fuller and delivery, and it has been hit high in the air. He wanted to hit it straight, but it has not gone straight, and Harbhajan Singh in the mid-on region has dropped that catch. It was a simple one for sure, but we have to even keep into consideration that they are in their 40s, and they don't have the strength. No, they don't have the cardio of what they had back in the day. They don't have that agility that they had back in the day. But this one, and more importantly, they don't practice cricket day in and day out. Yes, that is more important one. And yes, this was an easy catch in his playing days for sure. But today he takes it and drops it in the end unexpectedly out there. This one bowled down the leg, and Aaron Finch just takes a single, and that will be given by a leg by. And it is Alim Dar who is doing the umpiring out there. And Alim Dar also recently retired from umpiring. Yes. So I guess and I think he was an umpire at the Lanka Premier League also. He was there at the Lanka Premier League in the earlier stages. But international cricket definitely has called it quits. And there was a huge amount of huge amount of applause given to him for the work that he had done by all the cricketers across the cricketing fraternities, because he is definitely amongst those iconic cricketers. But what an iconic catch it would have been if Parthiv Patel had held on to this. Once again, swing coming into play, and Parthiv Patel just jumps across like a kangaroo and he tries to grab that delivery, but unfortunate that it didn't come into his hands. 2 overs are done and dusted. It is 17 for no loss. क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त. यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11. क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिकॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी. तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माय शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलली ऑन क्रिक. हेलो एंड नमस्ते. मेरा नाम है यश पाठक. क्रिकॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है. इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल. क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में. पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए. तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर. और अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा. थोड़ा ऊट पटांग सा ही होगा, लेकिन मजा जरूर आएगा.
Najaf Shah continuing bowling his second and final over. He bowled a very good first over where he had Finch and Kallis hopping around. Hopping around not because of the pace, but hopping around because of the ball swinging in to the right-hander. He's a left-arm fast bowler who used to play for Pakistan, and he definitely got a good start. In the last ball of the previous over, Parthiv Patel dived acrobatically to his right, but could not quite even get to the ball. So can't even call it as a dropped catch. But that's the thing in T10 cricket. You just if it is your day, it is your day. You just make use of all the chances that you can get across. As Najaf Shah comes in from left arm over the wicket to Aaron Finch once again. 17 for no loss. Oh, beautifully bowled by Najaf Shah. He saw Aaron Finch charge down the track and he bowled a terrific in-swinger. Now the problem was, if the ball had not swung, Aaron Finch would have been walking back, because that would have been a toe crusher and that would have crashed into the stumps. But because the ball swung, it swung past the leg stump. Else this would have been the first wicket down for the California Knights. So Aaron Finch is looking all at sea. 3 from 7. Jacques Kallis is looking, I guess, a bit better, even though he has got a couple of chances. But yes, he's looked better than Aaron Finch, and Aaron Finch doesn't look like the same guy who scored 75 not out yesterday. Now this is in the air. This could be the end of Aaron Finch. This one is a slow delivery from Najaf Shah. It's gone high in the air, and this Corey Anderson. Well, this and Harbhajan Singh cannot stop a smile here. 2 drop catches in the span of 2 overs. The cutter from Najaf Shah, and this one came in pretty late. Aaron Finch went through the swing pretty early, and no, it was not the cutter. It was not the cutter. He just was beaten by the swing, and the ball went straight up in the air as he looked to flick. And well, Corey Anderson came in from short extra cover, got to the ball, took the catch, but then in the end just plonked it. And Najaf Shah was actually applauding Corey Anderson for taking the catch, and then, oh, you dropped it? That was his reaction. 18 for no loss are the California Knights. Yes, they had 2 opportunities, but 2 opportunities have been missed out there, as both the openers, Finch and Kallis, get a lifeline out here. Will they capitalize on this? Is something that we need to see. And I was looking into Najaf Shah's career. Definitely a Pakistan player who took 421 wickets in FC cricket, first class cricket, but only played 1 international game for Pakistan in 2007. So that's why Pakistan was so good in that period of time. That is what it says. Yes, it was a high days of we can say Shoaib Akhtar, and it was the starting days of the players who came in after that, Sohail Tanveer and all these cricketers. But definitely, yes, amongst them is what Najaf Shah tried to compete. But having 421 wickets is definitely something that you need to applaud. This one was a good shot being played by Aaron Finch. It was a full-length delivery once again, and he hit it down the ground towards the mid-off region and got the timing to perfection, and the ball races away into the boundary cushions for a 4. Yes, you pointed out importantly there, the outfield is not quick. It is sluggish, and it is going to stop if you hit high in the air and the ball just comes and lands down. It is not going to roll down. That is why you need to put in the effort in order to make sure that the ball completely goes over the boundary line if you are intending to hit it down the ground. That is what Aaron Finch almost tried it there. Last ball, and he tries to do a paddle hit. 6. And it has gone beyond the boundary line for a maximum. Great way to end the over. 29 for no loss the score after 3 overs for the Morrisville Unity. I think Mohammad Kaif sitting in that team's dugout is also stunned as to how did that go for 6. क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त. यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11. क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिकॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी. 3 overs gone, then the score reached 29 for no loss for the California Knights. 2 chances gone down in successive overs. First, Jacques Kallis dropped on 3 by Harbhajan Singh, and then Aaron Finch also dropped on 3 by Corey Anderson. And it is not a good pitch to bat on at all. And well, there's an impact player who's coming in, but as of now, PNR is coming on to bowl, and Rahul Sharma
is coming in as an impact player. We'll let you know in a while as to who is he replacing for now. But as of now, it's a replacement. Rahul Sharma has come into the side, but he's not going to bowl. It's Pinar who's going to bowl, and he is a left-arm spinner, left-arm break. And he gets a wicket first ball! Where were you, Mr. Pina? It is an arm delivery from left arm round the wicket. Obus Pina. Yorker is backed away to the leg side. Through the offside. Missed. The ball pitched. Came in with the angle and bang. Hit the leg stump. And there goes that first wicket. So the drop catch does not matter too much as Obus Pina gets his first wicket. In fact, in the very first delivery that he has bowled. And more about Obus Pina. Well, Obus Pina was South African. He has never represented South Africa, but he has played for South Africa under 19s, and he has played for their local team, that was Free State, and also for the Eagles that he has been a part of. Never played ODI cricket, and he's aged 33. And as looking at his stats are concerned, and not quite kind of a bowler that you might want to see, because first class average 28.9 with the ball, list A average 38, and T20 bowling average 34. And with the bat, he's more of an all-rounder, because he averages 46 with the bat in first class cricket, 40 in list A cricket, and 21 as a strike rate of 112. So he's more of an all-rounder, is Obus Pina from South Africa. So South African gets a South African, and Jacques Kallis has to depart early in this in game number 10. Yeah, yes, Dhanush. Yes, Obus Pina is definitely coming from South Africa, that being 33 years old. We will be questioning 33 years old. Still, he could have played for South Africa. Exactly. Still, but he that has too in such a crisis scenario which they had. Yes, definitely is what we can think of. But the thing is, he is now a USA citizen out there. He has moved out to now Morrisville, and he has been a part of the Morrisville minor league team, and also the Morrisville team that was a part of the Major League Cricket also. Not the Morrisville, it was the Washington Freedom. He represented that team in the Major League Cricket a month ago, and now he's playing for the Morrisville Unity out here. So he is a cricketer who is definitely kind of moved shores from South Africa to USA now, and kind of gain a cricketing career out there. And that is what US T10 Masters or the Major League Cricket came into existence, because a lot of cricketers were given the opportunity to come to US and continue their cricketing career, or finish up the cricketing career that they have left in them. And that is why we saw Corey Anderson kind of retiring at the age of 31 and going to USA. He is also now a USA citizen, and he is going to represent USA whenever USA goes for the big tournaments. Next year, we'll be having the T20 World Cup in USA, and there is a possibility of we seeing USA out there for sure. But Milind Kumar, who has come out to bat right now, starts off the innings with a boundary out there towards the covers region, and we are done with 4 overs right now, and it is 35 for 1 after 4. क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त. यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11. क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिकॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी. तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माई शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलोली ऑन क्रिक. हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक. Right, so 4 overs, 35 for 1 might be, less as compared to T10 cricket. Savage is the new bowler, and Savage is a treatment from Aaron Finch. A length ball outside the off stump, pace he comes down the track and lofts it over long off for half a dozen. 41 for 1 in 4.1 overs. And I was about to say that just because this is a T10 game, doesn't mean that your projected score needs to be 120, 130. You look at the pitch as well, and the conditions are not quite the best to bat. And Aaron Finch is trying to make most of whatever he has got, because he has been dropped twice now. First, he was dropped on 3, and then he was dropped by Parthiv Patel on 14. It was a difficult chance, but it was a chance all right.
because it came in the previous over when Obus PNR, the slow left-arm bowler, tried to just angle it away from Finch, and he tried to open the face of a bat and guide it towards short third, but got a thick outside edge and Parthiv Patel could not hang on. This is the same Aaron Finch who was scoring at a strike rate of 150 last afternoon rather, not evening. And today he's been struggling, but he somehow got the runs. 21 from 12 balls, 1-4 and 2 sixes. Calvin Savage is the bowler's name, and looking up at his profile, well, he is also from South Africa, from the KwaZulu-Natal province, where he has represented Dolphins as well, and he was representing Texas Super Kings in the recently concluded major cricket league, so Major League Cricket. So both these bowlers have come in from that Major League Cricket, and they have been acclimatized to the surroundings over there, as how the conditions are, and their experience would definitely help their team. So a single then taken by Aaron Finch, 42 for 1, score doing the bulk of the scoring. Out of 42, Finch has moved to 22. And just talking about another international match which is happening out there, it is Afghanistan and Pakistan. They are playing in Sri Lanka, because this is the home series for Afghanistan, but the home for Afghanistan is usually India. And for obvious reasons, Pakistan won't be playing cricket in India, and I'm not quite sure why aren't they playing in the Middle East either, because that's also kind of a home for Pakistan. So it's in a neutral territory. Afghanistan and Pakistan are playing in Sri Lanka, primarily in Hambantota. They'll play 3 ODIs. The first ODI, Pakistan have been stopped at 2-0-1. Well, that's very good work from Afghanistan, you would say, but look at the next news which is coming your way. Afghanistan are 4 for the loss of 2 wickets. They have lost 2 wickets in the span of 2 balls to Shaheen Shah Afridi. Who else but the son-in-law of the great Shahid Afridi, who is playing in this series. And Rahmat Shah and Ibrahim Zadran are out, and this could be a cliffhanger, because we also felt, both me and Dhanush, that once Pakistan get to 200, they have that bowling lineup to restrict Afghanistan under 200. Well, Afghanistan have never beaten Pakistan, I assume, in ODIs, and this is also the first time that Afghanistan bowled out Pakistan in ODIs. Maybe tonight is the first time when Afghanistan could end up beating Pakistan as well, provided they get some batting under their belt. Talking about batting, Milind Kumar is a new man in, and an LBW appeal, huge LBW shout, but the umpire has moved it away. Now that looked very, very close, because Milind Kumar had walked right across his stumps, and that could have taken the leg stump, but the umpire seems to be telling Calvin Savage that the ball seemed to be going down the leg side, and looking at, oh yes, it's comfortably going down the leg side. Probably I got just carried away because the batter went right across the stumps, and that's why maybe I thought it was hitting the leg stump. Talking about Milind Kumar, well, he's a Delhiite, and he is 32 years old, and he has represented Delhi in both in the Indian T20 League and also in Delhi State. He's represented Sikkim as well. He has represented Bangalore as well in the Indian T20 League, and in the MLC he represented the Texas Super Kings team. Meanwhile, over pitch outside the awesome, Aaron Finch has lofted the strike over the bowler's head, over long off, and he has ended the over with a bang. A huge over, then 16 runs coming from it, 5 gone. California Kings are 51 for 1. Aaron Finch has moved to 29. क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त. यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11. क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिकॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 5 ओवर हो चुका है यहाँ पर. 51 पे 1 यहाँ पर स्कोर फॉर कैलिफोर्निया नाइट्स. और जरूर यहाँ पे फिंच अपने जो फॉर्म है कल के यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि यहाँ 29 पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर मिलिंद कुमार यहाँ पर दूसरी छोर पे खेल रहे हैं, जो एक खिलाड़ी थे जो रणजी क्रिकेट में और डोमेस्टिक क्रिकेट में. क्या वो आउट नहीं हुए अभी? लगता है आउट हुए. हाँ, वही, क्योंकि उन्होंने सीधा शॉर्ट बॉल कट किया. तो मैं देख रहा हूँ कि ये लोग सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे. मुझे भी ऐसे
मुझे लगा था वो पिच होके फील्डर के हाथ पे गया, पर नहीं, सीधा कैच था वो फील्डर के हाथ में। कौन थे वो? एशली नर्स होंगे शायद। नहीं, पर एशली एशली नर्स नर्स ऐसे नहीं नहीं है। दिखते, पर यहाँ पर हम पता चल जाएगा। यह है शेहान जयसूर्या। शेहान जयसूर्या थे वहां पर पॉइंट रीजन पे, और मिलिंद कुमार वापस जाना पड़ेगा 6 रन बनाने के बाद 7 गेंदों में। और मैं इनको तकरीबन 2-3 बार बेंगलुरु स्क्वाड में देखा था, और मुझे लगा था कब खेलेंगे क्योंकि 2015 से 2019 तक तकरीबन 5 या 6 सीजन बेंगलुरु टीम में थे, पर वो कभी भी प्लेइंग 11 में कहीं भी दिखे नहीं। ये और दूसरी मिलिंद थे, छामा मिलिंद, दोनों मिलिंद एक समय बेंगलुरु टीम में थे, पर सिर्फ बेंच वार्म कर रहे थे तकरीबन 5-6 सीजन के लिए, और अपॉर्चुनिटी नहीं मिला उनको खेलने के लिए बेंगलुरु स्क्वाड में। और अभी ये भी कोरी एंडरसन की तरह, उन्मुख चंद की तरह अभी यूएसए शिफ्ट हो गए, और यूएसए में मेजर लीग क्रिकेट खेले इस साल रिटायरमेंट लेने के बाद। और अभी नंबर 4 में आ रहे हैं कप्तान सुरेश रैना। कल ये नहीं खेले थे। मैं कहता हूँ इनको मिस्टर आईपीएल टाइटल दे ही देना चाहिए। हाँ, मिस्टर आईपीएल इनको बोलते हैं हम, क्योंकि पहले खिलाड़ी थे तो जो 1000 रन बनाए आईपीएल में, इंडियन T20 लीग में, और बढ़िया नाम कमाया था। पर यहाँ पर बोल्ड हो गए पहले ही गेंद में, और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर पीएनआर, क्योंकि ऐसे परफॉर्मेंस अगर देते हो तो केशव महाराज को भी ये टक्कर एग्जैक्टली। और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ने एक लेफ्ट हैंड बैटर को आउट किया, तो कोई वो सोच रहे हैं कि एक लेफ्ट आर्म बॉलर एक लेफ्ट हैंड बैटर को आउट नहीं कर सकता। प्लीज देखिए यूएस T10, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ने ओवर द विकेट से आके शॉर्ट बॉल पे बॉल को अंदर लाई। चलिए, शॉर्ट बॉल पे रायना स्पिनर्स के अगेंस्ट भी आउट हो रहे हैं अभी तो। नहीं, मजाक नहीं, क्योंकि हम सबको पता है सुरेश रैना शॉर्ट बॉल अच्छा नहीं खेलते, लेकिन वो जब शॉर्ट बॉल बाउंसर के रूप में आता तब अच्छा नहीं खेलते फास्ट बॉलर पे। और ये गेंद पिच होके सीधा अंदर आई। शायद रायना वॉज बीटन बाय पेस, और वो खेलने गए बैकफुट पे पूरी तरह से चूक गए, और गेंद जाकर सीधा ऑफ स्टंप से टकराए, एंड आउट ऑफ नोवेयर ओबस पीएनआर हैट्रिक पे आ गए हैं। अब ये उनका आखिरी ओवर है, और इरफान पठान है नए बल्लेबाज, और वो अपने मस्त मौला अंदाज में आ रहे थे, आराम से अपना टाइम देके। अलीमदार ने कहा चलिए जल्दी चलिए, नहीं तो मैं आपको टाइम आउट कर दूंगा, और भाग के आना पड़ा उन्हें क्रीज तक। और यहाँ पर थोड़ी मुश्किल में है कैलिफोर्निया। इनफैक्ट अगर उनका मैं स्कोर कार्ड देखूं ना, एरन फिंच को हटा तो कुछ है ही नहीं स्कोर कार्ड में। जॉक कालिस 9, मिलिंद कुमार 6, सुरेश रैना फर्स्ट बॉल डक। 51 के स्कोर में 29 तो एक आदमी ने बनाया है, यानी एरन फिंच। क्या यह हैट्रिक हो पाएगा? शॉट थर्ड, शॉट फाइन लेग, ये सर्कल के अंदर है, शॉट एक्स्ट्रा कवर, शॉट मिड विकेट, ये विकेट के सामने है। पीएनआर ओवर द विकेट। ओ ड्रामा इरफान पठान से। जैसे ही पीएनआर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो गए, इरफान पठान ने बैकअवे किया, कहा कि मैं रेडी नहीं हूं सर, मैं रेडी होना चाहता हूं। चलिए, अब रेडी है। हैट्रिक बॉल आ रहा है पीएनआर से। ओ, ये मिसाइल था पीएनआर से। उन्होंने ये, मुझे पेस देखना होगा कि कितना था ये पेस। ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगा 100 kph तो होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने लिटरली डार्ट किया बॉल और पैड्स पे डाली गेंद। शायद ओवर एक्साइटेड थे वो गेंद को डालने के लिए, और इरफान पठान ने उसे आराम से खेल दिया मिड विकेट की तरफ। 1 रन यहाँ पर ले लिया। और अब इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से एरन फिंच पीएनआर को खेलते। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से एक बार फिर से आर्म बॉल, और इसे पंच कर दिया पीएनआर के बाएं तरफ, और यहाँ पर 1 रन मिलेगा। 53, 3 विकेट के नुकसान पर कैलिफोर्निया नाइट्स। बढ़िया स्पेल होता हुआ यहाँ ओबिस पीएनआर के द्वारा, क्योंकि पहले ओवर में जब इन्होंने बॉलिंग की तब जैक कालिस के विकेट लिया था, और अभी इस ओवर में पहली गेंद पे मिलिंद कुमार का और दूसरी गेंद पे सुरेश रैना का बैक टू बैक विकेट्स लिया। पर यहाँ पर एक बढ़िया शॉट इरफान पठान के द्वारा विड्थ दिया था यहाँ पे उनको, और उसको अच्छी तरीके से कट करते हुए बॉल पहुंच जाता है पॉइंट की रीजन की तरफ के चौका। और ये चौका नंबर 100 है इस टूर्नामेंट का, और उतना गेम्स नहीं हुआ है, सिर्फ 5 या 6 मैचेस हुआ है अब तक, पर उतने में ही यहाँ पर एक बढ़िया सा बैटिंग प्रदर्शन होते हुए, और इसी कारण इरफान पठान अभी सीधे हाथ में दिए थे लॉन्ग ऑन के फील्डर जो सैवेज है वहां पर, कैल्विन सैवेज, और वो यहाँ पर छोड़ते एक आसान सा कैच। तो तीसरा कैच यहाँ छूटता हुआ, और बढ़िया स्पेल खत्म होता हुआ पीएनआर का। 3 विकेट 13 रन देकर 2 ओवर में। स्कोर है यहाँ पर 58 for 3 आफ्टर 6 ओवर्स। क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना?
ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त, यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11। क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिकॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी। तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट। इसके बाद आने वाले बल्लेबाज की हम चर्चा कर रहे थे, कोई भी नहीं है, एक रिकार्डो पावेल है और एक दिनेश रामदिन है जो अभी हाल ही में इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज में कमेंट्री कर रहे थे वहां से। और तो बैटिंग बहुत ही थिन है कैलिफोर्निया नाइट्स की, लेकिन यही तो हम कहते हैं ना, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं T10 क्रिकेट में? आपको टेस्ट क्रिकेट में भी 11 बैटर्स चाहिए, ओडीआई क्रिकेट में भी 11 बैटर्स चाहिए, T20 क्रिकेट में भी 11 बैटर्स चाहिए, T10 में भी 11 बैटर्स चाहिए। आप बॉलर्स की तरफ से सोचिए, टेस्ट क्रिकेट में तो अनलिमिटेड ओवर्स है, ओडीआई में 10 ओवर है, T20 में 4 ओवर है, T10 में तो 2 ही ओवर है। तो बैटिंग के हिसाब से भी वैसे होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर कैचेस, आज फील्डिंग कुछ खासा रही नहीं है क्योंकि टोटल 4 कैचेस ड्रॉप हुए हैं। सबसे पहला कैच छोड़ा था जॉक कालिस का, हरभजन सिंह ने छोड़ा था 3 रन पर। फिर एरन फिंच को ही 2 बार छोड़ा है, एक 3 पर कोरी एंडरसन द्वारा और एक 14 पर पार्थिव पटेल द्वारा। और अब इरफान पठान का यहाँ पर कैच छोड़ा है 5 रन पर और कैल्विन सैवेज द्वारा। कोरी एंडरसन गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं, एक और बाएं हाथ के गेंदबाज, और ये डाउन द लेग साइड। इसे पहले तो फिंच ने बैक अवे किया, तीनों स्टंप्स दिखाए अपने, फ्लिक करने का प्रयास किया पर पूरी तरह से चूक गए, गेंद उनके पैड से टकराई, विकेट्स के पीछे गई और इरफान पठान ने एरन फिंच को बुला लिया एक क्विक सिंगल के लिए। और शायद यहाँ पर एक हल्की सी एक बैंटर कहते हैं ना कोरी एंडरसन और एरन फिंच के, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ खेल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इंडियन T20 लीग में बेंगलुरु में खेले, जी बिल्कुल, बेंगलुरु में खेले, इंडियन T20 लीग में खेले हुए हैं, तो वो एक दूसरे के मतलब साथी माने जा सकते हैं। फिलहाल 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर कैलिफोर्निया नाइट्स। मैं मानता हूं इस पिच पर अगर 100 भी बन गए तो एक चैलेंजिंग टोटल होगा मॉरिसविल के लिए। लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, उसे कट करने का प्रयास इरफान पठान द्वारा, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। इरफान पठान अंपायर से पूछते हुए क्या ये वाइड नहीं था? अंपायर ने कहा जी नहीं, बिल्कुल लाइन के अंदर था। और अगर आप सोच रहे हो कि धनुष ने ऐसा क्यों बोला कि 5 ही मैच हुए हैं जबकि ये 10वां मैच है, क्योंकि 4 तो अबैंडन हो गए, आधे से ज्यादा मैचेस तो यहाँ पर अबैंडन हो गए। तो जितने मैचेस हुए हैं, अभी जो 10वां दिख रहा है उसके आधे मैचेस ही पूरे हुए हैं, तो उतने में भी अगर आपके 100 फोर्स हो गए हैं तो सच्ची में सही बात है। 60 पे 3 बढ़िया बैटिंग तो हुई है इस टूर्नामेंट में। इसी कारण यहाँ पे हम देखते हैं कि एरन फिंच खेल रहे हैं, क्रिस गेल खेल रहे हैं मॉरिसविल के लिए, जैक कलिस खेल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये T10 टूर्नामेंट इसलिए ऑर्गेनाइज किया है कि जो क्रिकेटर्स अपनी रिटायरमेंट के बाद भी, सब क्रिकेटर्स को वो होता है कि जो वो इच होता है अपने अंदर कि 2-3 साल वंस अ क्रिकेटर ऑलवेज अ क्रिकेटर। हाँ, वंस अ क्रिकेटर ऑलवेज अ क्रिकेटर जरूर, पर जब तक उनका फिटनेस उनको हेल्प करता है तब तक वो क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। और वही अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर मिलता हुआ इन क्रिकेटर्स को। एक जो पहले टूर्नामेंट आप पूछे थे मुझे, जो इस यहाँ रिटायर्ड क्रिकेटर्स के लिए बनाया था, वो था मैंने बोला था अबू धाबी T10। उससे पहले मुझे पता है 2014 में मास्टर्स T20 लीग का एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, और उस सीरीज में भी सिर्फ उस सीरीज में 6 टीमें थी और 6 टीमों में तकरीबन 20 ओवर्स मैच था। T10 अभी तक आया नहीं था तब, दिस वाज 2014। तो उस समय भी ओवेश शाह जो थे वो रिटायर्ड हो चुके थे, वो खेल रहे थे। ब्रैड हॉग जो हारी उस समय वो 46 इयर्स के थे, तो वो तकरीबन 45 इयर्स तक खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो वो भी रिटायर हुए थे, वो भी खेल रहे थे। और ऐसे 2-3 खिलाड़ी, असनत जयसूर्या, ये सब खेल रहे थे उस समय में 2014 में। दैट वाज द फर्स्ट रिटायर्ड क्रिकेट लीग जो हुआ था। पर उसके बाद हाल ही में अगर हम 2-3 साल से देख रहे हैं तो जरूर ये बढ़ गया है, T10 लीग आ चुका है। और जब T10 लीग एक बढ़िया सक्सेस पाया, हम देख रहे हैं कि सारे जो लोग हैं वहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं T10 क्रिकेट के ऊपर। और यूएस में जब आपकी सोच है कि क्रिकेट एक बड़ी मार्केट बन सकती है, तो T10 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं न्यूअर ऑडियंस के लिए और इस गेम क्या है, इसमें क्या होता है, ये सब। और मेजर लीग जो हुआ हाल ही में, वो बड़ी सक्सेस हुआ।
तकरीबन मॉरिसविल और डैलस में 6-6 हजार की कैपेसिटी स्टेडियम तकरीबन पूरे टूर्नामेंट के लिए सोल्ड आउट हुआ था। तो क्रिकेट के लिए लोग देखने के लिए आएंगे वहां पर, वो तो 100% अभी श्योर हो चुका है। और उस सक्सेस के द्वारा अभी मेजर लीग क्रिकेट जो अगले साल होगा 2024 में, वो कैलिफोर्निया में 3 स्टेडियम्स में होगा, ये सब बताया जा रहा है। तो 3 स्टेडियम कैलिफोर्निया में ही आपको मिलेगा। तो देखिएगा अगले 5-6 साल में हर स्टेट में तकरीबन एक स्टेडियम भी मिला तो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी यूएसए में भी क्रिकेट डेवलप होने की। और यहाँ पर 7 ओवर समाप्त होता है। यहाँ पर 65 for 3 है स्कोर कैलिफोर्निया नाइट्स के लिए। क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त। यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11। क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिकॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी। तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माई शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलली ऑन। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक। क्रिकॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर। और अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा। थोड़ा ऊट पटांग सा ही होगा लेकिन मजा जरूर आएगा। तो जुड़े रहेगा मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पर जिसका नाम है कॉन्ग्स बज और मेरा नाम है यश पाठक। तो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जा। चलिए, यहाँ पर 7वें ओवर की प्रगति हो चुकी है। 7 ओवर के बाद 65 है 3 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर कैलिफोर्निया नाइट्स एक फ्लोटिंग स्लॉग ओवर्स का यहाँ पर एक इंडिकेशन किया था अनिल डार ने। आखिरी 3 ओवर यहाँ पर बचे हैं और आखिरी 3 ओवर कौन कौन डाल सकते हैं यहाँ पर मैं एक नजर डाल रहा हूँ। तो नजर शाह के 2 ओवर पूरे हो गए, 2 ओवर 15 रन, कोई विकेट नहीं। ओवर स्पिनर 2 ओवर 13 रन, सारे के सारे विकेट उनको ही गए हैं, 13 विकेट। तो बचे 3 ओवर में ऑप्शंस हैं श्रीशांत, कैल्विन सैवेज और कोरी एंडरसन। तो फिलहाल कैल्विन सैवेज अपना दूसरा ओवर डाल रहे हैं। कोई और भी बॉलर है कि आई एम सरप्राइज हरभजन सिंह ने एक भी ओवर नहीं डाला। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये 8वां ओवर है, हरभजन सिंह एक ही ओवर डाल सकते, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते। तो हरभजन सिंह उन्होंने एक ओवर नहीं डाला है। फिर डेन पीट भी आई एम अज्यूमिंग एक ऑफ स्पिनर ही थे, ये उनको भी नहीं दिया है। शेहन जयसूर्या बॉलिंग कर सकते हैं और राहुल शर्मा जो इम्पैक्ट प्लेयर है वो भी तो आए हैं। तो आई एम नॉट श्योर क्या है यहाँ पर थॉट प्रोसेस हरभजन सिंह की स्पेशली। तो यहाँ पर राहुल शर्मा ने नजफ शाह को इम्पैक्ट कर दिया है। तो नजफ शाह बाहर गए हैं और राहुल शर्मा अंदर आए हैं। और नॉर्मली जब भी आप एक बॉलर को इम्पैक्ट प्लेयर यूज करते हैं तो फिर वो बॉलर बॉलिंग करता है। अभी अगर आपने 8 ओवर तक राहुल शर्मा को बॉलिंग दिया नहीं है तो आपने उनका इस्तेमाल कैसे किया है, आई एम नॉट टू श्योर। और इसी बीच यहाँ पर इरफान पठान अपना विकेट गवाते हुए, फ्लाइटेड गेंद थी, फ्लाइटेड बोल रहा फुलर लेंथ की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर, उसे लॉफ्ट करने का प्रयास किया इरफान पठान ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन वहां पर डेन पीट की बात कर रहा था और डेन पीट आ गए सामने और कैच थमा बैठे लॉन्ग ऑफ के रीजन में। इरफान पठान का कैच छोड़ा था 5 पर कैल्विन सैवेज ने और कैल्विन सैवेज ने ही उनका विकेट निकाला है धीमी गति की गेंद से। और इरफान पठान वापस जाते हुए 67 पे 4था विकेट गिरता हुआ। यहाँ से स्कोर कार्ड को देखा गया तो ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से यहाँ पर कैलिफोर्निया नाइट्स स्ट्रगल कर रही है, लेकिन ये पिच को अगर देखा तो बैटिंग ट्रैक नहीं लग रही है, गेंद जो है बल्ले पे आ नहीं रही है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको कुछ तो स्कोर चाहिए। आप 70 या 80 से खुश नहीं हो सकते। जो बचे कुछ 16 गेंदे हैं उसमें यहाँ पर कैलिफोर्निया को कोशिश तो करनी होगी 100 तक पहुंचने के। वहीं पर एरन फिंच की भूमिका बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि एरन फिंच को 2 मौके मिले हैं और चलो कुछ भी हो जाए उन्होंने वो मौकों का इस्तेमाल तो किया है। स्कोर कार्ड पे एक नजर मारूं तो एरन फिंच को छोड़कर कोई भी खिलाड़ी डबल फिगर्स में पहुंचा ही नहीं है। इनफैक्ट एरन फिंच के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट स्कोरर एक्स्ट्राज है, 10 तो एक्स्ट्राज है यहाँ पर।
और बाकी सारे सिंगल डिजिट है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पिच जो है बैटिंग करने के लिए इतनी अच्छी नहीं है। और मैं बैटर्स के नाम गिना देता हूँ, जॉक कालिस, सुरेश रैना, इरफान पठान, ये तीनों के तीनों जो है ज्यादा रन नहीं बना पाए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की पिच होगी है। और अब रिकार्डो पावेल आए हैं, कह सकता हूं कि लास्ट हिटर माने जा सकते हैं कैलिफोर्निया नाइट्स के लिए। अगर ये चले तो फिर ये जल्दी जल्दी रन बना सकते हैं। जनरेशन का रोमन पॉवेल थे? नहीं, रोमन पॉवेल से काफी बेटर बल्लेबाज थे, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, चलिए आते ही ऑफ द मार्क हो गए। एक सीरीज था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, आई थिंक 2002 का था। तो इंडिया जब भी वेस्ट इंडीज जाती थी, रिकार्डो पावेल सिर्फ इंडिया के सामने ही मारते थे। तो 3 मैच का सीरीज था, तो उसमें से एक इंडिया जीती और 2 में वेस्ट इंडीज ने जीत, क्योंकि रिकार्डो पावेल ने दोनों मैच में हाफ सेंचुरीज बना दी। ये उस टाइम के आप सोच सकते हैं कि एक जेसन रॉय थे या वीरेंद्र सहवाग थे, क्विक फायर नॉक्स खेला करते थे, और ये 2001-2002 के खिलाड़ी थे। बट अनफॉर्चुनेटली वेस्ट इंडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा क्रिकेट खेल नहीं सके, क्योंकि उनका जो भी है कंसिस्टेंसी बहुत कमी थी। और इसी बीच एरन फिंच ने अब डिसाइड कर लिया है कि वो यहाँ पर काउंटर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि इस ओवर में अभी तक सिर्फ 3 ही रन आए थे। बैक ऑफ अ लेग डिलीवरी थी, अपने आप को रूम दिया और सीधा खेल दिया खिलाड़ी के ऊपर से, बॉलर के ऊपर से 4 रन के लिए। 4 विकेट के नुकसान पर कैलिफोर्निया नाइट्स अभी यहाँ पर स्लॉग ओवर्स में स्लॉगिंग करना शुरू करना होगा, और यही हम देखना चाहते हैं यहाँ पर एरन फिंच के द्वारा स्पेशली, क्योंकि अब वो सेट हो चुके हैं, तकरीबन 38 रन बना चुके हैं। और अभी यहाँ पर वो एक अपॉर्चुनिटी लेकर, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर स्कोर करना पड़ेगा। बाकी बचे 2 और याद रखिएगा सामने वाली टीम में क्रिस गेल है। हाँ, वो भी देखना पड़ेगा। और अगर क्रिस गेल, हाँ हम बोल सकते हैं आप उनकी उम्र हो गई है जरूर, पर उनकी मसल स्ट्रेंथ और हिटिंग स्ट्रेंथ सेम है, और वो अभी भी लंबे छक्के मारते हैं और मारते ही रहेंगे तब तक वो क्रिकेट खेलते हैं तब तक। यहाँ एक शॉर्ट पिच डिलीवरी और इसको बढ़िया तरीके से एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर एक बाउंड्री मारते हुए यहाँ पर एरन फिंच, और ये यहाँ पर अपनी 50 की तरफ जा रहे हैं। स्कोर यहाँ पर 76 for 4 8 ओवर होने के बाद। क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त। यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11। क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? आपको बता दूं कि क्रिकॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी। तो देर किस बात की है मेरे दोस्त? 8 ओवर के बाद 76, 4 विकेट के नुकसान पर अगर 12 रन प्रति ओवर यहां से गए तो 100 के आसपास 100 तक पहुंच जाएंगे कैलिफोर्निया, और 15 रन प्रति ओवर गए तो 106 तक पहुंच जाएंगे। तो आई एम अज्यूमिंग 100 और 110 के बीच में यहाँ पर स्कोर करने का प्रयास करेंगे। मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको पिच के बारे में बताओ तो बहुत ही डार्क है, और जब पिच ऐसे डार्क होता है तो बॉल बल्ले पे आती नहीं है, गेंद बल्ले पे आती नहीं है। कोरी एंडरसन डालेंगे 9वां ओवर, और ये फुलर लेंथ की गेंद और इसे ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में। एक ही रन लेने का वहां पर मौका मिलेगा। 77, 4 विकेट के नुकसान पर। तो पिछले ओवर में एक अच्छा ओवर बीतता हुआ कैलिफोर्निया के लिए, क्योंकि भले ही वो उन्होंने इरफान पठान का विकेट खोया, लेकिन उस ओवर में 11 रन उन्होंने बनाए हैं। मैं ओवर्स के हिसाब से देख रहा हूं तो एक दूसरा ओवर है 14 रन, फिर तीसरा ओवर, चौथा ओवर, 5 ओवर में 16 रन आए। ये ऐसे 2 ही ओवर्स हैं जो 15 के ऊपर गए हैं, या माफ कीजिएगा 12 के ऊपर गए हैं। उसके अलावा बाकी सारे ओवर्स जो है 10 के नीचे ही हैं, और एक ओवर 11 के गया है। तो बैटिंग क्लियरली यहाँ पर इजी नहीं है। 77, 4 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद, छोटी गेंद, एरन फिंच ने बैकअवे करके मार दिया है कवर के ऊपर से। 6 रन, मेरे हिसाब से तो 6 रन है ये। शायद ये रोप्स के बाहर ही गिरी है जहां से मैंने देखा है, और अंपायर ने चलिए इशारा भी दे दिया है 6 रनों का। और हम बात कर रहे थे 100 चौकों की, यहाँ पर 87 छक्के भी लग चुके हैं। इन 18 तारीख को शुरू हुआ ना टूर्नामेंट, 4 दिनों में 87 छक्के यहाँ पर। और ये एरन फिंच ने ये पिछले 3 ओवर से मैं देख रहा हूँ बैकअवे कर रहे हैं,
या तो मिड ऑफ या तो एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ या तो एक्स्ट्रा कवर, वही लाइन और लेंथ डाल रहे शायद, सॉरी वही लाइन और लेंथ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और शायद यहाँ पर बॉलर्स को उनके बॉडी में डालना पड़ेगा। 83 4 विकेट के नुकसान पर कैलिफोर्निया। और यहाँ पर एक बार फिर एक बढ़िया शॉट मारने की कोशिश और फाइन लेग में क्रिस गेल वहां पर बाउंड्री को रोकते हैं और 2 रन लेकर अपनी अर्धशतक पूरी करते हैं। यहाँ पर लगातार दूसरा अर्धशतक इस सीजन में और सिर्फ 25 गेंदों में ये अर्धशतक पूरे करते हैं। यहाँ मैं क्या पर बोल रहा हूँ फिंच। धनुष, फिंच ने तो अच्छी पारी खेली है लेकिन क्रिस गेल के वो एफर्ट के लिए भी तारीफ बचानी पड़ी। हाँ, इसीलिए मैं क्रिस गेल नाम लिया। अगर कोई और होते तो मैं जरूर फाइन लेग फील्डर ने क्या यहाँ पर चलिए fielding लेते करते एक हल्का सा पॉज, आप तालियों की गूंज सुनिए। शायद तालियों की गूंज और ज्यादा हो जाएगी क्योंकि एक और चौका लग गया है यहाँ पर। हाँ जरूर, और उसी बात मैं कहना चाहता था। और जब आप थालियों पे गए, क्योंकि यहाँ पर एरन फिंच जो गियर शिफ्ट किए हैं वो बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पर एक बार फिर यहाँ पर 75 रन मारने की इच्छा होगी और 7 बॉल बचा है और इनके पास वो कैपेसिटी है मारने की। आखिरी गेंद यहाँ पर क्या सिंगल लेकर अपने पास ही स्ट्राइक रखेंगे, देखना पड़ेगा। यहाँ पर आखिरी गेंद लेग साइड की तरफ एक सिंगल लेकर स्ट्राइक रखते हैं और डीप फाइन लेग से शॉर्ट फाइन लेग तक आकर फील्डिंग करना होगा क्रिस गेल वहां पर। और 9 ओवर होने के बाद 90 पे 4 यहाँ पर स्कोर है कैलिफोर्निया नाइट्स की। क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त। यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11। क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिकॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी। तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माई शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलली ऑन क्रिक। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक। क्रिकॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट 9 ओवर 90 4 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर कितना नेविन स्टुअर्ट आए हैं, नेविन स्टुअर्ट के पार्डन, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे और पहली गेंद धीमी गति की, उसे स्लॉक करने का प्रयास किया एरन फिंच ने। इनफैक्ट ये वन ऑफ द फ्यू शॉट्स है जो उन्होंने लेग साइड पे खेला है आज। नॉर्मली एरन फिंच यूजुअली आधे से ज्यादा शॉट्स लेग साइड पे ही मारते, लेकिन आज क्योंकि उनकी लाइन उस तरह से रही है शुरू से, पहले बॉल से गेंदबाजों ने कोशिश की है कि ऑफ स्टंप के बाहर डाले, उन्हें जबरदस्ती ऑफ साइड पे खेलना पड़ा और वो भी उन्होंने सही यहाँ पर एडजस्ट किया अपने 9 और लेंथ और एक अपने बैटिंग स्टाइल को। और ये शायद मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये एक या 2 ही शॉट मुझे दिखे हैं लेग साइड पे जाते हुए और जब लेग साइड पे गई गेंद तो इनसाइड एज से गई। दूसरी गेंद यॉर्कर, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग नवीन स्टुअर्ट। यहाँ पर सिर्फ एक ही रन मिलेगा रिकार्डो पावेल को। चलिए नवीन स्टुअर्ट की बात करते हैं। राइट आर्म मीडियम पेसर हैं, वेस्ट इंडीज के लिए खेल चुके हैं और माफ कीजिएगा वेस्ट इंडीज के लिए खेले नहीं है लेकिन बारबाडोस ट्राइडेंट्स, गयाना अमेजॉन वॉरियर्स और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के लिए सीपीएल में खेल चुके हैं। चलिए ये थोड़े बहुत रिटायर्ड लगते हैं, 40 वर्ष के हैं और इनका जन्म हुआ था टोबैगो में, जो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो टीम है वहां पर इनका हुआ था। लेकिन ये वेस्ट इंडीज के स्क्वाड्स में मुझे दिखे थे, ऐसा मुझे लग रहा है, पर चलिए वो तो पुरानी बात है। इसी बीच फिंच ने स्लॉक कर दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन 98 4 विकेट के नुकसान पर। धीमी गति की गेंद थी लेकिन उससे भी ज्यादा ये स्लॉट में थी, यानी फुलर लेंथ की गेंद थी। फिंच ने बैक अवे किया लेग साइड पर ऑफ साइड में मारने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा कि गेंद जो है उन्हें मिली है ऑफ स्टंप के पाले में, तो उन्होंने सोचा चलिए मैं लेग साइड पे मार देता हूं और वो अब पहुंच गए हैं 62 के स्कोर पर। 3 बॉल बचा है यहाँ पर और एक बार फिर लॉफ्टेड शॉट मारने की कोशिश, टाइमिंग नहीं मिली यहाँ पर। एक सिंगल लेकर स्ट्राइक रेट करते हैं यहाँ पे रिकार्डो पावेल के लिए और ये एक बढ़िया शॉट था ऑन स्लॉट, जो आपने बोला वही गिरा और सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर एक बढ़िया शॉट जो हम ट्रेडमार्क एरन फिंच शॉट कह सकते हैं। एरन फिंच बढ़िया हिटर है वी जोन में और आज वो एक एग्जांपल देखे हैं। और यहाँ पे एक रन आउट की अपॉर्चुनिटी थी उन्होंने फेंका क्यों नहीं नेविन स्टुअर्ट के लिए, पर वो फेंके नहीं वहां पर
वो शॉट यहाँ पर रिकार्डो पवेल सीधा मारने की कोशिश डाउन द ग्राउंड, और यहाँ पर अपने जूते से बॉल को रोक कर बॉल हाथ में लिया और अंडर आर्म थ्रो करने गए नॉन स्ट्राइक करंट की तरफ। अगर वो मार देते तो जरूर एरन फिंच आउट होते वहां पर नहीं किया वहां पर, और आखिरी गेंद पे सिंगल लेकर जो आपने बोला था वही हुआ। 10 ओवर में 100 रन बनाया है यहाँ पर कैलिफोर्निया नाइट्स 4 विकेट के नुकसान पर 63% ऑफ द स्कोर एरन फिंच के द्वारा। जी बिल्कुल, ज्यादा दूर नहीं थे वो 75 से। उन्होंने 63 रन बनाए, 30 गेंदों का सामना किया, 4 चौके और 5 छक्के। पर दुख की बात यह है कैलिफोर्निया नाइट्स के लिए एक भी खिलाड़ी डबल फिगर्स नहीं पहुंचा एरन फिंच को छोड़कर। जॉक कालिस 9, मिलिंद कुमार 6, सुरेश रैना फर्स्ट बॉल डक, इरफान पठान 9, रिकार्डो पवेल नॉट आउट 4, और इनफैक्ट जो सेकंड हाईएस्ट स्कोर थे वो 3 लोग थे, जॉक कालिस 9, इरफान पठान 9 और मिस्टर एक्स्ट्रास 9। ये थे टॉप हाई स्कोरर्स। और जहां तक साझेदारी का सवाल है, यहाँ पर कुछ ऐसे साझेदारी पनपी नहीं। 19 और 29, 22, 0 और सिर्फ वो 5th विकेट पार्टनरशिप जो थी वो थी 33 रन, लेकिन वो 33 रन में से रिकार्डो पावेल ने सिर्फ बनाए 4 रन। पर गेंदबाजी बेहतर हो सकती थी धनुष, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ड्रॉप कैचेस। जॉक कालिस को 3 पे छोड़ा, एरन फिंच को 2 बार छोड़ा, 3 और 14 पे, और इरफान पठान को 5 पे। तो सोचे एरन फिंच का अगर कैच पकड़ा होता, वो 14 तो फिर भी ठीक है, पार्थिव पटेल के लिए डिफिकल्ट चांस था, लेकिन वो जो कोरी एंडरसन ने छोड़ा कवर पे 3 रन पे, अगर वो पकड़ा होता तो शायद ये लोग 50 भी नहीं बनाते। हाँ, शायद हम रेट्रोस्पेक्टिव में वो बात कर सकते हैं जरूर। पर बॉलिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर शाह जो पहले ओवर की 2 ओवर में 15 रन दिए नजफ शाह, और उसके बाद श्रीशांत सिर्फ 1 ही ओवर किए। मुझे लगा था वो आखिरी ओवर करने के लिए आएंगे, पर 1 ओवर में 13 रन दिए और उसके बाद नहीं आए। पर मेन विकेट तय करते इस टीम के लिए ओपेस पीएनआर, जो 3 विकेट लिए 2 ओवर में से और सिर्फ 13 रन दिए उस 2 ओवर में, और 1 विकेट मिला यहाँ पर कैल्विन सैवेज को और 26 रन दिए वो 2 ओवर में, और कोरी एंडरसन 21 रन 2 ओवर्स में, और आखिरी ओवर जो नेविन स्टुअर्ट ने डाला 10 रन दिए थे। और अब तो टारगेट है मॉरिसविल के लिए 101, क्या वो बना पाएंगे वो देखना पड़ेगा जब सेकंड इनिंग शुरू होगा तकरीबन 10 मिनट में। You are listening to Flash News, brought to you by Crickong. Cricket fans, welcome back to another electrifying episode of Flash News, your one-stop destination for all things cricket. I'm your host Isha, and I have got a treasure trove of cricket stories that will have you glued to your headphones. Get ready for a roller coaster ride through the cricketing world as we uncover the latest happenings. It's time to dive into the world of cricket, where heroes rise, challenges are conquered, and passion reigns supreme. Our first story takes us to a jaw-dropping confession by the cricketing maestro, Steve Smith. Brace yourselves, because it turns out that during the Ashes, he was battling an injury that could have sidelined most players. From cortisone shots to splints, Smith's journey of determination and sacrifice is inspiring. And guess what? He's not giving up. The India ODI series and the World Cup are his next battlegrounds. It's a tale of courage, resilience, and the indomitable spirit of a true cricket legend. Shifting gears, let's talk about the buzz surrounding the upcoming Asia Cup. The Board of Control for Cricket in India has unveiled the squad, and as always, there's a fair share of surprises and debates. Former cricketer Madan Lal is raising questions about the fitness levels of KL Rahul and Shreyas Iyer. But what's really raising eyebrows is the absence of Yuzvendra Chahal and Ravichandran Ashwin. It's a story of anticipation, second-guessing, and a splash of concern. The Asia Cup is not just a tournament, it's a stage where stars are born and legacies are forged. Now, let's leap onto the international stage, where fresh talents are writing their own stories. Picture this. A left-arm fast bowler named Spencer Johnson making waves with his remarkable debut in South Africa. What's even more intriguing? He's caught the attention of none other than Mitchell Marsh, who's singing praises of Johnson's potential. A meteoric rise, a chance encounter with fame, and a promising journey await.
It's a story of dreams taking flight, talents being discovered, and a bright future ahead. Hold on to your seats, because the anticipation is real. The UAE's ILT20 is gearing up for round 2, and it's bringing a star-studded ensemble. Brace yourselves for David Warner, Mark Wood, Ambati Rayudu, and more. Warner and Wood, once rivals at the Ashes, are teaming up again to set the stage on fire. The buzz is palpable, the excitement contagious, and it's a story of cricket's global camaraderie, unexpected partnerships, and the fervor of a new season. Now meet Minnu Mani, the cricket sensation who's not just a captain, but a symbol of inspiration. Fresh off her debut for the senior India women's cricket team, Minnu has been chosen to lead Kerala's women's cricket squad. Her journey from paddy fields to international stadiums is nothing short of remarkable. From her coach's confident endorsement to her teammates' admiration, Minnu's ascent to captaincy is celebrated by all. At just 24, she's become Kerala's cricketing pride. Let's close today's episode with a triumphant note. Sa emerging has emerged as a victor against Zimbabwe, emerging in a thrilling match. The stars of the day? Mitchell Van Buren and Daniel Smith, who showcased unbeaten half-centuries that left spectators in awe. Their partnership, like a symphony on the field, orchestrated a glorious victory. It's a tale of dedication, teamwork, and a sweet taste of success. Before we wrap up, fantasy team enthusiasts can now revolutionize their gaming experience with our Crickong app. Prepare to unlock the full potential of your team selection as our app provides a wide array of interactive features and expert predictions. Our esteemed analysts offer valuable insights and game-changing analysis, giving you a strategic advantage in the highly anticipated live matches. We emphasize the significance of considering multiple factors and making informed decisions to optimize your team's performance. Immerse yourself in the thrill of the game with our engaging live commentary and captivating podcast. We highly value your input and encourage you to share your feedback through our interactive chat option. It's time to take your fantasy team selection to new heights and dominate the competition like never before. That's a wrap on another exhilarating episode of Flash News from Crickong. We have journeyed through injuries and resolve, squad revelations, emerging talents, and triumphant victories. Cricket, with its myriad stories, reminds us that it's not just a sport, it's a canvas where dreams are painted with passion and perseverance. Stay tuned for more thrilling updates that promise to satiate your cricket cravings. Until next time, I am Isha. Keep that cricket spirit alive. This is Flash News, brought to you by Crickong. The much-anticipated 2023 Asia Cup is gearing up to be a monumental event, marking the 16th edition of this prestigious cricket tournament. Set to unfold in the realm of one-day internationals, a total of 6 teams are poised to vie for supremacy on the field during this edition. Mark your calendars for the cricketing extravaganza, as the Asia Cup is scheduled to grace the cricketing world in the months of August and September 2023. With the excitement building up, Crickong will provide news and live score updates throughout the tournament. Be sure to follow our amazing app. Only on Crickong.
Welcome back to all the listeners on the Crickong Live podcast. Parthiv Patel and Chris Gale. Yes, the age-old Bangalore openers are out here to open the batting for Morrisville Unity, and it is Peter Siddle to open the bowling for the team out here. And the first ball itself, it almost hit in the groin area for the batter Parthiv Patel, and they require a 101-run target for the Morrisville Unity to win this game. I have Ayush with me. Hello Ayush, how are you doing? I hope that you are doing all well. And today we are doing this US T10 Masters. I guess you have been having an idea about this. It is a tournament that is organized by the T10 Sports Company, where they are going across the world. They started off with Abu Dhabi T10 in 2018. They had 3 successful seasons there. Then they moved to Zimbabwe just a couple of weeks ago, where we had the Zimafro T10. And from there, we have come in here in the US T10 League, happening here in Lauderhill, Florida. So it's basically an opportunity for yesteryear cricketers like Suresh Raina, Jack Callis, and Peter Siddle, and all of these cricketers who had their heydays, but today they still have that itch to play cricket. And I guess it's a great opportunity for them to experience that moment here. Definitely, and a great chance for all of our spectators to, witness all of these exciting players who have been missing from the cricketing field for very long. And in that, saying that, Parthiv hits a great 4 down the covers. Well, look at that, Parthiv standing tall with Chris Gale there in the middle. And what a beautiful shot. I mean, I kind of find that I use it as an antonym, because that statement itself sounds Parthiv standing tall with Chris Gale. I mean, just the imagination of that. Well, again, I mean that's just a joke, because we all know the height of Parthiv Patel and the height of Chris Gale. And well, I thought this was in the air. It was in the air, but a good fielding effort by one of the fielders out there at cover, as Peter Siddle is not quite started well. He's given a boundary to Parthiv Patel, and this is one thing with Parthiv Patel. Even if he's at 40, 45, 50, he will still be playing these kind of shots, because right from when he was he has been playing cricket, he has been flaying the ball through the offside and pouncing on those short balls. It doesn't seem as if he has retired. Even now, he looks as fit as a fiddle. And I had a chance to meet him in the recently concluded Indian T20 League. And that guy is a gem, because not only does he play cricket well, he has a good analysis of the sport as well. And as Dhanush should be knowing, he has been a scout for Mumbai, and he has picked up gems, and he knows in and out of all the players, even the current ones who are coming up. If you ask him about Nehal Vadera, he'll give you a long list of what are his advantages, strong points, weak points. Same goes for Tilak Verma. Akash Madhwal as well, and he's a powerhouse of information. And when such a person is in there in your camp, I think half the battle is won automatically. 7 for no loss, final delivery of the first over. Siddle is bowling, and Gale has hammered it. I think he can stop chasing it. That's gone to the cover fence in a flash, and that ends the first over. Then 11 for no loss. Our Morrisville chasing 101 for victory. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Welcome back, and it's almost like a retro music going out here, because suddenly we are seeing players who have represented certain teams in the past. Pawan Suyal will bowl, and yes, now I remember he has represented Mumbai in the Indian T20 League, and he's represented Delhi as well. And I think I saw him in the last 2 or 3 years back, because he's just 33 years old. And well, applause for that, because Chris Gale has actually run a single. He normally doesn't run singles, he jogs singles.
But and that's why he's laughing as well. He's smiling as well. And when Ayush entered the commentary box, he made a very interesting statement that he's excited to see all these stars back in action, because that's something which any cricketer, whether you are in the 90s, 2000s, 2010s, you remember, you want to see those cricketers play with whom you have grown up. Yes, you will always have the respect for Sir Vivian Richards, Sunil Gavaskar, etc., etc. But if you have grown up with Sachin Tendulkar, you more than respect, you start loving him. If you have grown with Chris Gayle, more than respect, you start loving him. But this is where I want to ask, primarily Ayush in particular, like there are so many T10 tournaments going on around. So there is 100 going on around. There is this tournament going on. Just prior to this, we had the other T10 league going on. I'm forgetting the name. MLC, Major League Cricket, going on in other states of the USA where current cricketers were playing. So Nicholas Pooran scored a century. So when you see these kind of cricket, with no disrespect, would you prefer the current generation playing the latest form of cricket, or would you still want your yesteryear cricketers, because the cricketers who have retired? And why I'm asking this, because in that T10, when you see Nicholas Pooran and all, they also score 4s and 6s, but they run between the wickets very quickly, and there is no half-hearted effort. For instance, in this game, in one innings itself, we saw the fielding side put down 4 chances, 4 dropped catches, and all easy ones, and you kind of get a sadistic feeling. What is your opinion of that? Well, Karthik, that's a very interesting question. But if you're a cricket fanatic, if you're a cricket fan, then you know any cricket is good cricket to you. I mean, be it the existing players, or well, let's take it the old player. Well, Universal boss at it again, another 4. And you know, this is not something that we witnessed from Chris Gayle, because we have known for his power and his aggression, and here he's just towing the ball through the boundary, and it's easy 4s coming in, but we would like to see those massive 6s that we are used to from Chris Gayle. And as you asked, you know, witnessing all of these players back is reliving our childhood, at the same time living in the present condition with all of the current cricket being happening. For example, you took the name of Nicholas Pooran. I mean, that actually reminds me of peak Chris Gayle. That's how he used to hit when he was in form. But today also, you can't ignore these elegant 4s that he has been playing. Talking about that excellent delivery, going down the leg side, given as a wide. But, you know, these leagues, when you talk about, you mentioned Major League Cricket, right? You mentioned the 100. And there is the Abu Dhabi T10 also, which comes up, yeah. That's right. We were just given this limited resource of watching IPL as an additional bonus. But now with so many leagues, we are actually surrounded with cricket. We have got so many opportunities to watch all of these favorite stars right back in action. Well, that's a great thing. So I would take this as probably Ayush wants to sit on the fence, wherein he definitely wants to see the current cricketers playing the latest format, but at the same time, he also wants to see the, our childhood cricketers, the people with whom we have grown with, and oh dear, what's happened out there? One of the fielders, has he slipped? Because he's in immense pain out there. I'm not sure what happened, because this is not a cramp. Oh, the ball has hit him. The ball has hit him on his knee, and he's not able to get up. And it is Milind Kumar, who is out there, and I think the ball first hit him, and then that pain in that knee. It's not an injury. It's just that knee joint which is hurting him. Well, it's never a great sight on the cricket field to see such things like that. But you know, we hope the match resumes as soon as possible, because ultimately our fans here can't wait to see all of those legends, be it Parthiv Patel or Chris Gayle, back in action, who has been batting beautifully up till now. Well, you know, 101 the target in 10 overs. What do you think of it? Well, I think it's under par. But if you look at this pitch, it's very good, and I'll tell you why. I look at the scorecard. Out of 163 have been scored by one person, and he was dropped twice. That's Aaron Finch, and there you go. And the moment I name him, and his highlights package come up, and this is why I was kind of disappointed with the effort shown by the Morrisville team, which is currently batting. But we are talking about their fielding. Their bowlers bowled really well. The pitch is slow, with the ball not actually coming onto the bat. But just hear this out. Jacques Kallis dropped on 3 by Harbhajan Singh. Aaron Finch dropped on 3 by Corey Anderson. Aaron Finch again dropped on 14 by Parthiv Patel. And Irfan Pathan dropped on 5 by Calvin Savage. Now my point is, Aaron Finch dropped on 3 and dropped on 14. And remove that 63 from that 100. Just imagine what would have been the score. And this is a sad thing, because Milind Kumar is just limping off the field. I think he has been hit just on that kneecap.
And because he's a fielder, there's no protection out there, and you don't have guards for that. You don't wear thigh pads and go out on the field. So I believe that Morrisville could have actually done better, and maybe because of those dropped catches, this target of 101 might just be difficult. And as long as Chris Gayle is batting, there's no problem. But look at the batting options after that: Corey Anderson, Shehan Jayasuriya, Nevin Stewart. There is no batter. I'm only seeing bowlers: Harbhajan Singh, Sri Sant, Calvin Savage, Dane Peat. So you get this opening pair out, or even Chris Gayle out, I think this team is going to be in a lot of trouble. But before that, Chris Gayle pulls one and just gets it over Suleiman Ben at mid-on, and it is just a single. So even if Chris Gayle is not able to pull the ball beyond the 70-meter boundary, then you can imagine what kind of a pitch is this. 2 overs gone. Yes, you wanted to say something. Well, 2 overs gone. It's 18 without loss. And, the sweet timer of the ball, the power hitter we were talking about, Chris Gayle. He's standing tall at 9. But as you mentioned, there is no much batting in this lineup. It's tough, but it's possible. Earlier it used to be the case that it can be universal days, universal bosses day. And once he gets going, the team gets an easy win. So that's not a difficult option. But the Morrisville here will hope for their batting openers, Salami Jodi, to stand tall, finish the match for the team and come back. Because ultimately, you don't have these luck factors working for you all day long. You may have dropped those chances, but here's the time to capitalize on the same and make those important runs for your team and take them to that sweet victory that we have been looking for. And for that, to break that, Ashley Nurse has been brought into the attack with 4 wickets to his name in 4 matches. But you see that best figure. He's got 3 wickets straight, and that's what the teams will be hoping this time around as well. That he comes back, gives a breakthrough, which is very much needed, by the way, because ultimately we saw one of the fielders limping out of the ground as well. Well, here's the first ball, and Chris Gayle, that's a full toss, has timed it beautifully out of the park. And that is something that we were talking about. This is something, the vintage Chris Gayle that we have been looking forward to. What do you have to say about that shot? Huh? Well, if the ball doesn't pitch, then the ball has got no interest in staying in the ground, because the full toss, and Chris Gayle did not even use his full strength. He just whipped it. And it's West Indian versus West Indian, Ashley Nurse, and this is definitely not what the doctor ordered for the California team. Now that's the moment the ball lands on the pitch, it comes on slow, and that's why Ashley Nurse and Suleiman Ben are going to be very critical in this particular pitch. And also because this team banks so much on its openers, as anytime this opening partnership is broken, Morrisville will find themselves in a pool of trouble, and California will find themselves right back into this game. And this is a shot, and it's pulled away past the bowler. Suleiman Ben does not even think of giving it a chase, and Suresh Rana has already started biting his nails. Well, as long as Parthiv Patel and Chris Gayle are out there, any target, even 120 is not going to be enough. It's a very slow pitch. The ball is turning a little bit. Ball is coming on slowly. But then if you have these 2 batters who are very good stroke makers, then no target is going to be enough. This is a shot. Parthiv Patel gets across, swivels and pulls it behind square leg, and Peter Siddle, still fit as a fiddle, gets across to square leg and keeps the batters to a single. In terms of proper batting options, you have Corey Anderson who can tonk the ball, and then you have Shehan Jayasuriya who can hit it. But other than that, there isn't. Oh, that's close! There's a huge shot, and up goes Harim Das finger. Wicket for Ashley Nurse, and this is exactly what the doctor ordered for the California team. It was balled with the angle from right arm round the wicket, and Chris Gayle looked to flick it, but probably one of those balls that pitched and just skidded on. It didn't come as per the pitch, because normally the ball takes a while before reaching, and that's why Chris Gayle probably missed the line. Otherwise he would not have missed it. He would have flicked it towards deep mid wicket. Ashley Nurse trapping Chris Gayle right in front, and that's a big blow to Morrisville unity. Chris Gayle departs for 16 from 10, but it's not just one man who was scoring. There's Parthiv Patel as well at the other end, and now I guess if we might see either Corey Anderson or Shehan Jayasuriya walking out at number 3. Both are left-handed batters, and ideally, and in fact there are so many left-handers in this team. Parthiv Patel, Chris Gayle, Corey Anderson, Shehan Jayasuriya amongst the
top batters that we might want to see. Or who knows, he might just send in Navin Stewart also to break that lefty-lefty combination. Maybe a lefty-righty combination is what might be used in this particular run chase. 30 for 1 in 2.5 overs, 71 needed from 43. Well, I think it's Shehan Jayasuriya who has come. Yes, it is Shehan Jayasuriya, ex-Sri Lankan cricketer. Just give you an update about who is or who was Shehan Jayasuriya. Well, born in Colombo, aged 31, and he's got a really big name. And he has represented Sri Lanka, and he has played for a variety of teams in T20 cricket. Chittagong Kings in the Bangladesh Premier League, Gaul Gladiators in the Lankan Premier League, Kandurata Maroons, Moo Sports Club, etc., etc. And he gets the first ball from Ashley Nurse, again pitching on the leg stump, but this one went with the arm, worked away towards deep mid wicket for a single. So a mixed over then for both sides, because 13 runs came from the over, but it also resulted in a wicket of Chris Gayle. 3 gone, 31 for 1 are the Morrisville Unity chasing 101 for a victory. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From internet. Ricardo Powell, off spinner. He comes on to bowl to Shehan Jayasuriya, and Suresh Raina has recognized, even he can bowl, Suresh Raina. He has recognized that this pitch is taking turn, and that's why he's giving it to spinners. 31 for 1 after 3.1 overs, a full toss, and worked away towards deep mid wicket. Should be just a single. It's Ashley Nurse out there, and it is just a single. And just looking at the bowling options here, beg your pardon, Ayush. So Peter Siddle, pace, has bowled 1. Pawan Soyal, pace, has bowled 1. Ashley Nurse, spin, has bowled 1. Ricardo Powell, spin, is bowling his first over. And then looking at the other bowling options, there is Ben Laughlin. Now this is in the air. This is in the air. Deep mid wicket. Get there, Ashley Nurse. Short ball. Parthiv Patel went for the pull, stuck on the surface, and did not quite come onto the bat, resulting in the top edges. Parthiv went for the pull, and Ashley Nurse, trust me, he tried his best. He charged onto the ball from deep mid wicket, but that's why this pitch is treacherous. You never know which one will skid on and which one will not even come on to the bat. Well, it would have been great, 2 wickets in back-to-back 2 overs, but let's say the luck is there with Morrisville for now. And this team, it looks like a full power changer, power batting unit, because ultimately when Shehan also arrived, the one thing that I was really interested at, the strike rate, that was 190, because as we say, it's a T10 league, you have got just 60 balls to finish up the game. But what I've liked today is witnessing all of these batsmen. Look at that. Once again, high in the air, and it has gone straight into the fielders. That's what we have been talking about. Spin doing the trick for the bowlers here, because ultimately it's a slow track, as you rightly mentioned. And Parthiv, that's a big blow. 2 wickets back-to-back in 2 overs. Not something that Morrisville was looking for. They must have thought, we get that luck that we have given to the other team by dropping all those catches. But look at the fielding. They have been spot on, right on the money. Easy sitter for the fielder at the mid-on point, and they have taken it rightly. Suresh Raina really happy with his team. But let's not forget Corey Anderson yet to come. And I was saying this is a team of power hitters. Yep. But what they have done right today is picked up the gaps, spotted on, and placed the ball for those easy runs. But it's not going to be so easy now, because ultimately the team is 2 down for 34, and they've lost 2 of their best batsmen. Yes, and coming back to the wicket, it was a flighted delivery around middle stump. Parthiv Patel looked to loft it, and he lofted it. I thought he connected well, but then because of the slowness of the deck, probably the ball hit the toe end of the bat and went straight to Suleiman Ben at long on, who took a dolly. Ayush did mention that the fielding has been okay. They have hung on to those dollies, but I have to tell you, it was the dollies which were put down by Morrisville Unity when they were fielding. And as many as three dollies were put down. I'll let go of that one drop catch with Parthiv Patel. That was a difficult one, but the other 3 were literal dollies. 67 needed from 37. Now this run chase has a different turn, because both the inform hitters are out. And now
PNR has come in at number 4. So interestingly, it's not Corey Anderson who has come in, and probably PNR is coming because Ashley Nurse is an off spinner and Ricardo Powell is also an off spinner. So maybe Harbhajan Singh thought, let me send in a right-hander rather than a left-hander. Brilliant over from Ricardo Powell. Just 3 runs coming from that over and the wicket of Parthiv Patel. Morrisville Unity are 34 for 2, need 67 in 6 overs. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering. चलिए यहाँ पर 5वें ओवर की प्रगति हो गई और बेन लाफलिन आए हैं और मुझे ये समझ भी नहीं आया कि सुरेश रैना पेस के पास गए ही क्यों, क्योंकि आपके पास स्पिनर्स की यहाँ पे तो अकाल तो है नहीं। जैसे ही पेस आया वैसे ही रन आ गए। बेन लाफलिन आए हैं और शायद उन्हें इसलिए लाया गया है क्योंकि बेन लाफलिन जब खेलते थे तब T20 में अच्छी डेथ बॉलिंग करते थे, उनके पास कटर्स काफी अच्छे थे और शायद उसके लिए लाया गया। लेकिन आप पेस यहां पर डालेंगे ना। चलिए उनकी टीम से पेसर्स की बात करते हैं। नजफ शाह बहुत अच्छी गेंदबाजी थी, 2 ओवर 15 रन, कोई विकेट नहीं। पर श्रीशांत 1 ओवर 13 रन। कैल्विन सैवेज ये भी पेसर थे, 2 ओवर 26 रन। कोरी एंडरसन पेसर 2 ओवर 21 रन। तो पेसर्स यहां पर रन खाए हैं। और अगर आपकी स्पिन बॉलिंग की मैं बात करूं, आपके पास जो स्पिनर्स के ऑप्शंस है, काफी सारे स्पिनर्स के ऑप्शंस हैं आपके पास। एरन फिंच खुद लेफ्ट आर्म स्पिन डाल सकते हैं, सुरेश रैना ऑफ स्पिन डाल सकते हैं, रिकार्डो पावल तो डाल ही रहे हैं, एशली नर्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पर कैच का अपील क्या यहाँ पर नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद जब वो स्टीयर करने गए शेहान जयसूर्या तो शायद गेंद ने बल्ले का भारी सिरा लिया, लेकिन कोई खतरा नहीं। तो चलिए पहले गेंद पे चौका खाने के बाद यहाँ पर अगली 2 गेंदें अच्छी गेंदें लाफलिन द्वारा, 2 डॉट बॉल, 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आयुष क्या लगता है आपको? 63 रन चाहिए 33 गेंदों में। क्रिस गेल पवेलियन में, पार्थिव पटेल पवेलियन में, आपको लगता है कि अब इस पिच पर ये टीम ये टारगेट चेज कर पाएगी? जी, जैसे कि आपने सही तरीके से कहा कि मेरे को लगता है सुरेश रैना यहाँ पे हल्की सी छोटी सी ट्रिक मिस कर गया, क्योंकि अभी बैक टू बैक 2 ओवरों में 2 विकेट मिली थी और भूलना नहीं चाहिए वो दोनों ही विकेट स्पिनर ने दिलाई थी। तो यहाँ पे लाफलिन को लाने का डिसीजन कितना सही है और कितना उनके हक में जाता है वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस हिसाब से अभी भी हम इस चेस को देख रहे हैं तो हरभजन सिंह का पेनर को यहाँ पे भेजना, वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन मेंटेन करके रखना चाहते हैं वो थोड़ी सी एडिशनल डिफिकल्टी हो, क्योंकि कोरी एंडरसन हम सब जानते हैं उनका गेम प्लान क्या रहता है। आते हैं, बड़ी हिट्स लगाते हैं, वो डेथ स्पेशलिस्ट हैं और उनको इसलिए बचा के रखना चाह रहे हैं, अपने सारे रिसोर्सेज को एक साथ खत्म नहीं करना चाहते। इसी बीच एक और आराम से सिंगल टहला दिया, क्योंकि 2 बैक टू बैक विकेट गिरे हैं, चाहते हैं थोड़ी सी वो पार्टनरशिप पन पे, ताकि थोड़ा सा वो रन की कमी, जितना अभी जैसे टारगेट अभी आप देखें 60 रन दूर है और जब तक वो रन बन नहीं जाते आप मैच अपने तरफ जीते नहीं है। तो वो चाहते हैं कि थोड़े से रनों का वो फासला कम हो, ताकि कोरी एंडरसन को अगर जब आने का मौका मिले, वैसे तो चाहेंगे कि यही दोनों बल्लेबाज मैच खत्म करें। ये देखिए कुछ अटपटा सा शॉट खेलने की कोशिश, पीछे की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन चूके वहां पे लाफलिन जैसा कि आपने कहा है वो पेस गेंदबाज, लेकिन यहाँ पे बहुत चतुराई से बॉलिंग की। पहले गेंद पे चौका खाने के बाद मात्र 6 रन दिए और बहुत ही बेहतरीन ओवर घटता हुआ यहाँ पे। 5 ओवर के बाद 40, 2 विकेट के नुकसान पर मॉरिसविल यूनिटी। Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live comment. चलिए 1 ओवर ऑफ पेस तो हो गया, वापस स्पिन आ गया है। तीसरा ओवर ऑफ स्पिन है ये। सुलेमान बेन आ गए हैं। ये आमतौर से स्लो ही डालते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन में भी स्लो डालते हैं, कभी इनसे फास्टर बॉल आप देखेंगे ही नहीं। तो ऐसे पिच पर उनके लिए ये एक टेलर मेड पिच जैसे हो सकता है, वैसे कहा जा सकता है। हालांकि मुझे हरभजन सिंह की कैप्टनसी में भी 1-2 सवाल थे कि चलिए आपको लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन
रखना था, पर आपने शेहान जयसूर्या को नंबर 3 पे क्यों भेजा? आप कोरी एंडरसन को भेज सकते थे नंबर 3 पर। अब यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि आपने कोरी एंडरसन को बाद में के लिए बचा के रखा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो बाद में आपको एक ओवर में 20 रन चाहिए हो, 15 रन चाहिए हो, 25 रन चाहिए हो, और फिर कोरी एंडरसन आ रहे हो, क्योंकि आपने कहा जरूर कि पीएनआर और शेहान ने यहाँ पर मैच खत्म करते तो अच्छा है, लेकिन उनके स्ट्राइक रेट्स अगर देखें तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। चलिए, पीएनआर तो अभी आए हैं, 3 गेंदों में 2 ही रन बनाए, लेकिन शेहान जयसूर्या एक चौके को अगर वो निकाल दे तो बाकी 9 गेंदों में उन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए हैं। सुलेमान बेन बाएं हाथ से राउंड द विकेट, पीएनआर को छोटी गेंद और पुल कर दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो जो एक चौके और छक्के की दरकार थी वो यहां पर आ गई, क्योंकि पिछले 1 2 3 4 5 6 7 गेंदों तक एक भी बाउंड्री नहीं आई थी और उसमें 3 डॉट बॉल्स भी थे। और अब वो थोड़ा सा प्रेशर, जो दबाव यहां पर डाला जा रहा था कैलिफोर्निया द्वारा, वो थोड़ा सा हट गया है। 48 2 विकेट के नुकसान पर 53 रनों की आवश्यकता 27 गेंदों में। जी, हमने कहा कि स्पिनर्स को मदद है, लेकिन उसके लिए आपको वो सही टिप्पा पकड़ना पड़ेगा। अगर इतनी छोटी डालेंगे तो वहां पे पीएनआर आग बंद करके भी शॉट खेल सकते हैं, काफी कंफर्टेबल नजर आए। तो गेंदबाज को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस पिच से मदद उतनी ही है जितना आप उसको ले पाए। अगर आप उसको पटकेंगे नहीं तो आपको मदद नहीं मिलेगी, अगर आप उसको छोटी डालेंगे तो भी आप आराम से उस शॉट को खेल सकते हैं। तो बेन के पास मौका है, आगे रखें, स्ट्रेट रखें, थोड़ी सी धीमी रखें ताकि वो पिच से ग्रिप मिल पाए, और पड़ के धीमी निकले तो उतनी ही डिफिकल्टी होगी सामने वाले बल्लेबाज को भी खेलने के लिए। लेकिन इस छक्के की बहुत ज्यादा जरूरत थी यहाँ पे मॉरिस विले को, क्योंकि बहुत टाइम से वो प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा था। विकेट के बाद एक अच्छा ओवर डाला, वहां पे मात्र 6 रन दिए आखिरी ओवर से भी, और ये छक्का उस प्रेशर को वो रिलीज करेगा। और यहाँ पर कुछ फील्डिंग चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि काफी लंबा समय बीत गया वो छक्के के बाद, और उन फील्डिंग चेंजेस का कुछ भी यहाँ पर फायदा नहीं होता हुआ, क्योंकि अगले ही गेंद पर यहाँ पर पीएनआर ने अपने आप को रूम दिया लेग स्टंप पर और उसे ड्राइव कर दिया कवर्स की दृष्टि। वो देवेंद्र बिशु हैं जो खड़े हैं वहां पर एक्स्ट्रा कवर में, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो देवेंद्र बिशु ही हैं। उन्होंने एक छलांग लगाई अपने दाएं तरफ, लेकिन गेंद जो है ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी शॉ दाढ़ी लगा कर आया है, उसी वैसे ही लग रहा है लेकिन वो पृथ्वी शॉ तो है नहीं 100%। और यहाँ पर सुलेमान बेन को एक विकेट की आवश्यकता है, और छोटी गेंद और यहाँ पर कैच छूटता हुआ, बहुत ही मुश्किल था सुलेमान बेन के लिए। बैकअवे किया, और एक बार फिर से जिस तरह से एरन फिंच खेल रहे थे, एरन फिंच भी उसी तरह से खेल रहे थे, लेग स्टंप से दूर हटकर ऑफ साइड पे खेलने की कोशिश कर रहे थे, और बिल्कुल पीएनआर भी वही कर रहे हैं, बैकअवे करके उन्होंने खेलने का प्रयास किया। लेकिन जब तक बेन पहुंच भी पाते गेंद की तरफ, गेंद रफ्तार की तरह निकल गई लॉन्ग ऑफ की तरफ। आखिरी गेंद यहाँ पर लो फुल टॉस, और इसे खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। एक ही रन मिलेगा, लेकिन एक बहुत किफायती ओवर यहाँ पर मॉरिस विल के लिए, क्योंकि इस ओवर में आए 1 चौका 1 छक्का और बाकी 4 गेंदों में 4 सिंगल, यानी 14 रन उस ओवर में आते हुए 6 ओवर के बाद 54 2 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर मॉरिस विल 4 ओवर में 47 रनों की आवश्यकता। मैच अभी एग्जैक्ट बराबरी पर आता हुआ। Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches exclusively on the Crickong app. Prepare yourself. छोटी गेंद, पटकी हुई गेंद यहाँ पर बेन लाफ्लिन द्वारा, और उसे पुल कर दिया है शेहान जयसूर्या ने डीप मिड विकेट की तरफ। 1 रन मिलेगा वहां पर, और रन रेट एग्जैक्टली अभी 12 रन प्रति ओवर हो चुका है, क्योंकि हर गेंद में आपको कम से कम 2 रन तो चाहिए ही चाहिए। और अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो थोड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि इस ग्राउंड पे आपको 2 रन मिल तो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर के फिटनेस लेवल्स पर भी डिपेंड करता है। और ये फायदा है पीएनआर का, क्योंकि शेहान जयसूर्या इतने भी ओल्ड, मैं कह सकता हूँ, क्या वर्ड यूज कर सकता हूँ, ओल्ड नहीं है, अनुभवी तो है लेकिन ओल्ड नहीं है। तो इसके लिए ये जो अभी हुआ, शॉर्ट गेंद थी, पुल करने का प्रयास किया पीएनआर ने, गेंदबाज ने बल्लेबाज को फॉलो किया धीमी गति से, और पुल कर बैट के निचले हिस्से पे लगी, और गेंद सिर्फ सर्कल तक गई, 30 यार्ड सर्कल तक, लेकिन क्योंकि वहां पर 2 रन ले सकते थे बल्लेबाज ने लिए। और यदि अगर यहाँ पर गेल और पार्थिव पटेल खेल रहे होते तो ये सिर्फ 1 ही रन होता। तो ये फर्क पड़ता है जब आप एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स के साथ खेलते हैं। एक और कटर यहाँ पर ऑफ कटर बेन लाफ्लिन द्वारा लेग स्टंप पर, उसे दिशा दे दी इरफान पठान की तरफ शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े होकर, और यहाँ पर 1 रन मिलता हुआ। 58 2 विकेट के नुकसान पर 21 गेंदों में 43 रनों की आवश्यकता।
जी हाँ, और सुरेश रैना यहाँ पे पूरा भरोसा जता रहे लाफलिन के ऊपर, उनको वापस अटैक पे लेके आए क्योंकि अपना पहला ओवर काफी किफायती डाला था, केवल 6 रन दिए थे और यहाँ पे बहुत अच्छी गेंद जरूर थी लेकिन उसको खोद के निकाला चौके के लिए, गई पीछे की तरफ। इसी की तो हम बात कर रही है, एक एक रन मानिए हीरे के समान हो रखा है इस वक्त। 39 रन चाहिए 20 गेंदों में और आसान बनाती चल रही है इसको बैटिंग टीम यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए ये शॉट हेलीकॉप्टर सा, मिनी हेलीकॉप्टर में कहूंगा, निकाला था। खेलना तो वहां नहीं चाहते थे लेकिन रन उतने मिलेंगे जितने चाहिए थे, वो 4 रन बहुमूल्य रन मैं कहूंगा। बहुत अच्छा ओवर घट रहा था, गेंद में भी कोई कमी नहीं थी। शॉट की तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे, बहुत ज्यादा जरूरत यहाँ पे मॉरिस विले को इस शॉट की। अगली बॉल को एक और लॉफ्ट कर देना चाहते थे लेकिन बीट हुए, अपील हो रही है बहुत जोरों से लेकिन अंपायर खुश नहीं। डॉट बॉल। वेल, बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है ये। पिछले 2 ओवरों से जो मुकाबले में बदलाव आया, एक बार को ऐसा लग रहा था जब 2 विकेट गिरे कि पलड़ा पूरी तरीके से कैलिफोर्निया ने अपने तरफ कर लिया है, लेकिन उसके बाद शानदार वापसी, शानदार साझेदारी जिसकी हम बात कर रहे थे पीएनआर और शेहान के बीच में होते हुए, और यहाँ पे अपील जरूर थी। 34 रन बना दिए हैं, बहुत अच्छी पार्टनरशिप चल रही है। इसी की तो हम बात कर रहे थे। कोरी एंडरसन को भी शायद इसीलिए रोक के रखा कि आके वो एंड में जो बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है उसको पूरी कर पाए। यहाँ पे ये देखिए लगा दिया है बड़ा शॉट और ये गेंद गई है सीधा आसमानों से बातें करने। 6 रन मिलेंगे इस शॉट के लिए, बेहतरीन छक्का। हमने कई बार बातचीत की कि पेसर यहाँ पे बहुत महंगे साबित हो सकते हैं, लेकिन इसी के साथ छक्के के साथ ओवर को समाप्त किया और स्कोर पहुंच चुका है 68, 2 विकेट के नुकसान पे। Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the... और यहाँ पर स्लॉग ओवर्स का इंडिकेशन अंपायर द्वारा, और पवन सुयाल एक बार फिर से पता नहीं सुरेश रैना क्यों पेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और पवन सुयाल जिन्होंने पहले ओवर में 7 ही रन दिए, लेकिन मेरे हिसाब से काफी रिस्की ऑप्शन है क्योंकि पिछले 2 ओवर में आए हैं 28 रन। छठे ओवर में आए थे 14 रन जो डाला था सुलेमान बेन ने, उसके बाद 7वें ओवर में भी आए 14 रन जो डाला था बेन लाफलिन ने। और दोनों ही ओवर्स में एक क्रिटिकल चीज थी, ओ यहाँ पर कैच ड्रॉप, एशली नर्स ने यहाँ पर कैच छोड़ा है पीएनआर का, ओ बस पीएनआर का, और ये कितना महंगा पड़ेगा कैलिफोर्निया को ये सिर्फ वक्त बताएगा। फुलर लेंथ की गेंद थी, बाहर की तरफ जा रही थी और पीएनआर ने उसे सीधा खेला, लॉफ्टेड कवर ड्राइव, और नहीं माफी चाहता हूँ, गेंद एशली नर्स के आगे गिरी, माफी चाहता हूँ। वो जो फ्रंट एंगल से लग रहा था सीधा हाथ में जा रही थी, लेकिन नहीं, गेंद आगे गिरी है तो ये एक डॉट बॉल माना जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर शायद सुरेश रैना जो है अपने स्पिनर्स पे भरोसा जता सकते थे, क्योंकि स्पिनर्स की बात करूं, एशली नर्स गेल का विकेट निकाला 1 ओवर 13 रन, रिकार्डो पावेल उन्होंने पार्थिव पटेल का विकेट निकाला 1 ओवर 3 रन, और सुलेमान बेन, हाँ जी हाँ, उनकी अच्छी खासी बॉलिंग नहीं हुई, लेकिन आपके पास 3 ओवर में इन दोनों के 1-1 ओवर बचे हैं तो आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते थे। लेंथ गेंद और इसे पंच कर दिया है कवर के दिशा में, ये शायद सीमा रेखा के बाहर जाएगी, नहीं, रुक गई और शायद देवेंद्र बिशु गेंद तक पहुंच भी गए। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा फील्डिंग एफर्ट है और गुड रनिंग, बहुत ही बढ़िया रनिंग दोनों खिलाड़ियों ने। यहाँ पर हम तो 2 रन की बात कर रहे थे, 3 रन मिल गए दोनों खिलाड़ियों को। एक पंच था पीएनआर द्वारा कवर्स और पॉइंट के बीच में से, और यहाँ पर 3 रन मिलते हुए हर एक रन यहाँ पर काफी, जी हाँ, देवेंद्र बिशु ही हैं जो गेंद तक पहुंचे। एक्चुअली गेंद रुकी हुई थी, रुकी हुई गेंद को उन्होंने पीछे धके लगे, कभी कभी वो धीरे धीरे जाकर रोप्स को टच कर देती है। 2 गेंदों में 3 रन, 16 गेंदों में चाहिए 30 रन, और ये साझेदारी बहुत ही बहुमूल्य, 37 रन बना दिया है इस साझेदारी ने 21 गेंदों में, यानी जो रन रेट है वो 10.6 का है, बहुत ही बढ़िया। अब शेहान जयसूर्या सामना करेंगे पवन सुयाल का, बाएं हाथ का गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज को बाएं हाथ से ओवर द विकेट आते हुए और छक्का खाते हुए, पैड्स पर गेंद, और ये फ्लैट सिक्स यहाँ पर
शेहान जयसूर्या द्वारा सिर्फ अक्रॉस गया। वेंकटेश प्रसाद जो इनके कोच हैं काफी वो भी एक मतलब एक अपना ये देते हुए वर्डिक देते हुए भाई बहुत अच्छा शॉट था, बहुत अच्छा शॉट था, हल्का सा क्रॉस गया, सिर्फ हल्का सा, और उसे फ्लिक कर दिया शॉट फाइन लेग के ऊपर से। वो चाहते तो मुझे नहीं लगता छक्का चाहिए था उन्हें, पर चाहिए छक्का मिल गया क्योंकि काफी फ्लैट सिक्स था और फाइन लेग को क्लियर कर गई। तो अब जो है एक बार फिर से मॉरिसविल यूनिटी इस मैच में वापस आते हुए, क्योंकि पिछले जितने भी गेंदे हुई हैं 3, 6, 9, 13 गेंदों में 3 छक्के और 2 चौके जड़ दिए उन्होंने, और अब चाहिए 15 गेंदों में 24 रन। जी हम मैच को पूरी तरीके से अपनी तरफ खींच लिया है मॉरिसविल की टीम ने, और इसी बीच बहुत अच्छी बड़ी अपील और अंपायर ने दे दिया विकेट। जी हाँ, जिस ब्रेक थ्रू की तलाश में थी यहाँ पे कैलिफोर्निया की टीम, वो दिलाई है यहाँ पे पवन सुयाल ने। आपको लगा नहीं कि वो लेग स्टंप को मिस कर देगी उस एंगल के साथ? जी मेरे लगने ना लगने से क्या होता है, यहाँ पे तो बल्लेबाज का फैसला और अंपायर है जो कि सबका भगवान में अंपायर फील्ड पे, और उसने करार किया आउट। वेल कैलिफोर्निया के लिए बहुत बड़ा झटका, बहुत ही बढ़िया ब्रेक थ्रू जो कि चाहिए था। सुरेश रैना यहाँ पे एक चैन की सांस लेंगे क्योंकि कब से रन पड़ रहे टीम को, लेकिन ये बड़ा विकेट आता हुआ। और अब जिसकी हम बात कर रहे थे, क्या कोरी एंडरसन, जिसकी हम कब से इंतजार आंखें टिकाए बैठे हैं, वो आके इस मैच को आगे बढ़ा पाएंगे मॉरिसविल की टीम के लिए। वेल देखने लायक रहेगा। अभी फिलहाल तो टीम का स्कोर पहुंच चुका है 77 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, 14 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता। शायद शेहान जयसूर्या भी वही बात करते हुए ओबस पीएनआर से, क्योंकि जो एंगल से मैं देख रहा था ये शायद लेग स्टंप को मिस कर जाती, तो ये एक लक्की विकेट मेरे हिसाब से मिल गया है पवन सुयाल को। लेकिन उनको उससे क्या, उनका काम था अपील करना, उनकी अपील खारिज नहीं कर दी गई, उनकी अपील को अपहेड किया गया, चलिए और आउट दे दिया अंपायर ने। और बस जैसे कि आपने कहा अंपायर भगवान है, अंपायर ने कहा आउट तो आउट, बात खत्म। कोरी एंडरसन अब आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। उनके लेवल के हिसाब से ये इतना ज्यादा कठिन लक्ष्य नहीं है, 14 गेंदों में 24 रन। लेकिन ये पिच, जिस तरह की पिच है, वहां पर आकर डायरेक्ट स्लॉप करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं ये अज्यूम करूंगा कोरी एंडरसन शायद थोड़े 2-3 बॉल खेले और वो 2-3 बॉल में वो ओबस पीएनआर को ज्यादा स्ट्राइक दे और उन पर ये दारोमदार डाले कि वो बाउंड्रीज मारे फिलहाल सिर्फ 2-3 गेंदों के लिए, और फिर जब आखिरी 10 गेंदें बची हो तब कोरी एंडरसन जो है प्रहार करे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 1 ओवर ऑफ स्पिन बाकी रहेगा सुरेश रैना की टीम की तरफ से। और ये अच्छी गेंद अंदर आती हुई बैक ऑफ अ लेग, उसे रन डाउन करने का प्रयास किया कोरी एंडरसन ने, बिल्कुल सही फैसला। अमूमन आप देखते हैं कोई भी ऐसा हिटर आता है वो देखता है अरे बाप रे 14 गेंदों में 24 रन चाहिए, यानी ऑलमोस्ट पर बॉल 2 रन चाहिए, मुझे पहली बॉल से मारना होगा। पर नहीं, इतना भी रैश खेलने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने पहले सोचा कि चलिए मैं एक रन ले लेता, पहले मैं थोड़ा अकस्मात कह रहा हूँ, एक्लेमेटाइज हो जाता हूँ इस पिच के साथ, और तब तक ओबस पीएनआर तो है ही जो अच्छा खेल रहे हैं, 10 गेंदों में 19 रन बनाकर उनको स्ट्राइक दे देता हूं। तो ये शॉट खेलने के चक्कर में गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया, पैड्स पे लगी और ऑफ साइड में गई गेंद और 1 रन चुरा लिया वहां पर। 13 गेंदों में 13 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता। आखिरी गेंद इस 8वें ओवर के अब राउंड द विकेट आ रहे हैं पवन सुयाल। लेफ्ट आर्म एंगल कोण बदला है उन्होंने, शॉर्ट फाइन लेग और थर्ड, ये जो 2 फील्डर्स है वो सर्कल के अंदर है। आगे आकर इसे खेल दिया, लॉफ्ट कर दिया बेहतरीन तरीके से, कवर के ऊपर से ये जाएगी शायद सीमा रेखा के बाहर। जी नहीं, एक बार फिर से रुक गई वहां पर, और सुरेश रैना खुद गेंद तक पहुंचे और उन्होंने एक छलांग लगाई, गेंद को अंदर रोक लिया, लेकिन थर्ड अंपायर शायद चेक करेंगे और जी नहीं। अरे रे, अब सुरेश रैना भी थोड़े चोटिल नजर आ रहे हैं क्योंकि लंगड़ते आ रहे हैं, पर थर्ड अंपायर ने अपना फैसला दे दिया है। 3 रन उस गेंद पर आते हुए, तो एक और अच्छा ओवर बीतता हुआ, यानी 6ठे ओवर में 14 रन, 7वें ओवर में 14 रन, 8वें ओवर में 13 रन। पिछले 3 ओवर में यहां पर मॉरिसविल ने बनाए हैं 41 रन, और उसके वजह से आखिरी 2 ओवर में चाहिए 20 रन। Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through 20 needed in the last 12 balls, and it's Ashley Nurse
who has come on to bowl the 9th over. Will we have a 10th over or not? Only this over will decide, because normally in a T20 game or in an ODI game or in a T10 game or in any wide ball game, your best bowler bowls the penultimate over. That is in T20 the 19th over, ODI the 49th over, and in T10 the 9th over. So that whoever is bowling the 10th over gets enough runs to defend. 20 needed from 12, make that 19 from 11 as Pinar gets a single. Now, nurse to Corey Anderson. Oh dear, that's not the line to bowl. It's a full toss. And Corey Anderson has hammered it over deep mid wicket for half a dozen. Well, now that half a dozen definitely gets the match right back in favor of Morrisville. 30 needed from 10 balls as Anderson accepts that gift from Ashley Nurse. He bowls at one bad ball. He bowled at one bad ball to Chris Gale as well. Chris Gale hammered a full toss over long on, and the smile which was on Raina's face after that wicket of Shehan Jayasuriya has now quickly disappeared into a frown, because even though they got the wickets, they are conceding runs as well. And maybe, they might just be wondering that we might be 10 runs short perhaps. But also a reminder that they were let off 4 times, 4 dropped catches in that innings, and otherwise this score would not have even got to 100. It's Aaron Finch, and it looked like Aaron Finch might have to face his second defeat in a row in spite of scoring a half century. Yesterday he scored 75 not out, still his side lost. Today it has been 63 not out, and his side might end up losing. Oh, this is slogged away, and I think this is a boundary. Yes, it is a boundary. Wide outside the off stump from Ashley Nurse, spinning away from the batter, but Corey Anderson has got good reach. He's not a short guy, he's a tall guy, gets down on a knee and uses his full reach and slogs it wide off mid-on. It's almost in the cow corner region, and the ball almost went the way, bouncing just inside the ropes. So, that should do the deal then. 9 needed from 9 balls. And this could possibly be the last over of the match as well. I think, let's not say too early. The ball is high up in the air and cleared the distance so far as well. 3 runs off 8 balls seals the deal. Corey Anderson, what batting! And this is something that we have been discussing so far. He was saved for these last break hammerage to give to the Californians, because ultimately look at that shot. Looked like he didn't time it well enough. Went too up high in the air, but what a slog, and crosses the boundary. Suresh Raina looking very disappointed. Well, the California might have gotten luck with the bat, but their bowlers, they had to face all the team. Another shot in the cow corner region, and this finishes off the game for Morrisville. What a victory! Well, it was looking like it was going down to the wire, but they have finished before over earlier, and they needed 20 runs from 12 balls, and they won with not only one over to spare, but there's a ball left in that 99th over to spare. And Corey Anderson, why was he being hidden in that dugout? He's come out and scored 21 runs from 5 balls, and I can easily remember all the 5 balls. First ball was an inside edge single. Second ball, full toss, slogged over long on 6. Third ball, slogged over mid wicket 4. Fourth ball, slogged over mid wicket 6. Fifth ball, slogged over mid wicket 4. It's almost like Mitchell Stark coming on to bat, because he targets that mid wicket region, and that's exactly what Corey Anderson did. But jokes apart, they made it look into an easy target, because that is what their firepower is all about. And comparing the two teams, this is the difference. Aaron Finch's side, or say Suresh Raina's side, one batter reaches double figures, and he reaches 63, but no other batter reaches double figures, and they end up stuck up on 100. 4 dropped catches. As far as Morrisville Unity is concerned, no batter even got to 30, but all 5 who came out to bat scored minimum of 10 runs. That means everyone got into double figures, and everyone's strike rate. Parthiv Patel strike rate 156, 14 from 9. Chris Gale 16 from 10, 160. Shehan Jayasuriya, I think he surprised me. I didn't think that he would come at number 3, but he surprised me because he was struggling. He was 9 from 10 when I saw, and then in the last 7 balls, or in the last 6 balls, he scored 18 runs. So he finished at a strike rate of 159. Obus PNR 23 from 12. Surprise package, because Obus PNR picked up 3 wickets as well. So my candidate for the player of the match, 23 from 12. And then Corey Anderson coming for those cameo knocks, 21 from 5, 2 4s and 2 6s. As far as California are concerned, well, they disappointed with the bat, and even with the ball, they kind of disappointed, because no one actually could get a grip on the Morrisville team. Peter Cyril, none for 11. Pawan Suyal, 1 for 20. Ashley Nurse had a very good opening over, 1 over, 1 for 13. Got Chris Gale, but the next over he was hammered, 1.5 overs, 1 for 34. Ricardo Powell, 1 over, 1 for 3. Ben Laughlin, 2 overs, none for 20. And Suleiman Ben,
bowling a solitary over, 1 over none for 14. So with this win, Morrisville Unity moved to the top of the table. They have now got 5 points from 2 games. And you mentioned about luck factor when this run chase was starting. The luck factor might be there in terms of the matches, in terms of the catches, but the luck factor is also there in terms of the matches happening. This tournament is been scheduled in such a season when you are expecting rains. So today is a day where there is no rain forecast, and Morrisville Unity have cashed in another opportunity, because you never know, come down the road, this tournament is ending on 27th August. Maybe tomorrow, day after tomorrow, the forecast may not be great, and you might end up losing opportunities to win, and you might have to settle with 1 point. In that scenario, winning a game really gives you a lot of confidence. So that's it then. Morrisville Unity winning comprehensively, beg your pardon, by 7 wickets and 7 balls to spare. Congratulations to them. It was a total team effort, and commiserations to California Knights. Maybe they could come back stronger in their next game. It's a short tournament, so they need to turn around quickly, and every day is a triple header day. And this is for now, we are signing off. This is Karthik, Aish, and also Dhanush signing off for the time being. But in less than half an hour's time, we will be back with the next match, which is scheduled at 9:15 p.m. IST, which is the New Jersey Tritons and the Texas Chargers. A look at the points table. Where are these two teams slated? Well, Texas Chargers are number 6 and New Jersey Tritons are at number 3. And so if New Jersey win this game, then they will move to top of the table. So we will be back at around 9:10 when this match gets underway. One thing is for sure, the forecast is very good for the rest of the day. So we should get good 20 overs of action throughout. So we are taking a break for now. Well, till we return, please do take a break and join us back at 9:15 p.m. IST. Until then, bye-bye from all three of us. Thank you for tuning in. This is your commentary team signing off. Catch you next time with more exciting live match.